हेलो हेलो एंड वेलकम टू वे फॉर आर्सेनल। कैसे हो आप लोग? हैप्पी 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 न्यू ईयर टू एवरीवन हु इज हियर, हु इज अलोन, हु इज विद फैमिली, हु हैज सम टाइम फ्री। मुझे लगा कि लाइक लोगों ने लंच वंच कर लिया होगा या लंच वंच खा रहे होंगे, कुछ लोग फ्री बैठे होंगे, कुछ लोग नैप करने के लिए जा रहे होंगे। तो मैंने सोचा एक चिल स्ट्रीम रख लेते। बहुत टाइम से हमने चिल स्ट्रीम नहीं रखी है टू बी ऑनेस्ट। तो अच्छी बात है, रखनी भी चाहिए, रखनी भी चाहिए। हाउ आर यू गाइस? अरे भाड़ में जाए फुटबॉल। नोबडी केयर्स अबाउट फुटबॉल। इट्स अ न्यू ईयर, देयर इज सो मच मोर टू लाइफ मैन। स्ट्राइकर से लेके डिफेंडर से लेके कोई बात नहीं, हम अपनी लाइफ में अभी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लाएंगे। आर्सेनल, यूनाइटेड, चेल्सी, बायर्न, बारसा सब भाड़ में जाए अभी। दिस फील्स आफ्टर एजेस बिकॉज इट इज आफ्टर एजेस। वी हैवंट हैड अ चिल स्ट्रीम इन सच अ लॉन्ग टाइम मैन। वेरी मच नीडेड स्ट्रीम, 100% भाई। आप कैसे हो? कैसे गया आपका न्यू ईयर भाई? आर्सेनल जो हार गई, कोई बात नहीं, आर्सेनल हार गई। मेरे को लिटरली 3 घंटे की, 3 घंटे भी बहुत ज्यादा है, लिटरली 1 घंटे का बुरा लगा। आई वॉज लाइक दक्ष, तू ऐसे तो अपना दिन नहीं निकाल सकता। एंड एज मच एज यू लव दिस टीम, as much as you love this team, you have to move on and you have to have thoda bahut fun. And so I did. I decided to go out, and it was the best decision here. Being surrounded by people, and you know what? I'll just be honest, man. Like you really enjoy life. You really feel a lot happier when you're around people. Uh, क्योंकि देखो, आई हैव बीन अ सिंगल चाइल्ड, ठीक है? मेरा तो आई हैव हैड लाइक जीरो सिबलिंग्स। सो आई हैव बीन अ सिंगल चाइल्ड, सो उसकी वजह से आई हैव बीन वेरी कंफर्टेबल स्टेइंग बाय माई सेल्फ ऑल माई लाइफ वेरी इजिली, ऑल राइट? बट now धीरे धीरे, you kind of realize that you always need some sort of a person around you. Now for a long part it was my girlfriend. हम लोग साथ रहते थे, but I will still say man, अगर आप लोग, if you haven't met anybody over New Year's, कल नहीं मिले, परसों नहीं मिले, क्रिसमस पे नहीं मिले, I will say go and be with people man. Go and be with people for 1 hour and I promise you it, that dopamine hit will be more than any, आपकी टीम जीतेगी उससे ज्यादा डोपामीन हिट मिलेगा आपको, आई प्रॉमिस यू। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, इट्स अ चिल स्ट्रीम। लाइक द स्ट्रीम एंड अच्छी तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट करना। कोई मेंबरशिप भी ले लो या पॉजिटिव स्टार्ट टू द न्यू, यस ऑफ कोर्स, इफ यू वांट अ पॉजिटिव स्टार्ट एंड गुड कर्मा, यार, यू कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट एंड गिफ्ट। यू कैन ऑलवेज गिफ्ट पीपल memberships if you want to. Which city do I belong to? यार मैं दिल्ली में पैदा हुआ था, मैं गुड़गांव में बड़ा हुआ हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल ए के एम। कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड नहीं देखा यार। इशरत सेज अस ब्रो अस। कल क्या किया? नथिंग मैन, आई जस्ट वेंट आउट, met a few people at the pub. I finally drank after पता नहीं कितने time, I तो forgot. My capacity is completely gone. 2 beers and I was done, huh? And yeah, it was nice being around people. It was nice chatting with people. It was nice being celebrated, remembered, just everything, man. People were so nice, and it's always nice to be around people like that. हाय दक्ष भाई, बाय लंच के लिए बुला रहे हैं, कोई बात नहीं आयुष, हैव फन, हैव अ गुड लंच। हेलो पुनीत, कैसे हो? थैंक्स फॉर द स्ट्रीम। अरे नो प्रॉब्लम उवैस भाई। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। उत्कर्ष को भी हैप्पी न्यू ईयर। कल रात मजे किए, थोड़े बहुत मजे किए यार, थोड़ा बुरा तो लगा होगा ऑफ कोर्स यार। यू कांट बी कंप्लीटली इम्यून टू फुटबॉल, बट आई थिंक इफ यू जस्ट मूव ऑन विद लाइफ ना, बियॉन्ड फुटबॉल, तो अच्छा लगता है। देसी पियो लॉल। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच यार। यू शुड ट्राई yerba mate. And I'll be honest, I'm not that big a fan of teas and coffees and mates and everything. I like cold beverages. So even this morning today, I'm having some juice. So I prefer this stuff, man. Um, Mr. Popo, congratulations. आपने membership gift करी. You will have amazing karma for the rest of the year. You have given the first gift of 2024. एक membership आपने gift करी है. इशरत को ये membership मिली है यार. Congratulations, इशरत. आज छोले कुलचे बना रहा हूँ। डैम गौरव, डैम नाइस, अच्छी बात है, बनाओ बनाओ। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल दानिश भाई। कर्ट, अरे छोड़ो, बोलने दो यार। देखो, फुटबॉल का मतलब ही होता है, लोगों के ओपिनियंस होते हैं, ठीक है? इसमें अब ट्रिगर होने की बात नहीं है, कोई बात नहीं। वाओ, आई बिकेम अ मेंबर अगेन। यस इशरत, यू डिड। हैप्पी न्यू ईयर, इवन मोर कुकिंग दिस ईयर। न्यू ईयर सेम अयान, लव यू यार अयान। वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल यार अयान, दिस गाय। इतना बड़ा मतलब, ही इज सच अ न्यूसेंस मैन, बट ही इज सो नाइस। वेरी वियर्ड पर्सन टू लाइक हैव इन योर लाइफ। विल यू मेक 2023 प्लेयर 11? ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दोस थिंग्स। मेरे फ्लैट के नीचे वाले रूम पे दो लड़की पूरा रात
बॉक्स चिल्ला के कूद रहा था, कल रात को अच्छे से नींद नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आज सो जा तू अच्छे से देबांजन, कोई बात नहीं, तू तुझे भी नाचना चाहिए, तू शुड हैव गॉन टू देयर हाउस एंड बी लाइक मेरे को भी नाचना है, आप बॉक्स बना रहे हो एंड एवरीथिंग, सॉरी यू प्लेइंग सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग, तो करो. Your New Year's resolution will come to all these things. Thoughts if someone who doesn't drink should start? No, not at all. If you you're not missing out on anything. Let me just be honest about this. If you are not drinking and you think कि मैं पी के कुछ खो तो नहीं रहा, trust me, you're not. Your body is thanking you and keep making it thanking you. मैं भी like I will only drink on super special occasions. New Year's is one I will drink on. कभी कभी आज पी लिया, जैसे सॉरी कल रात को पी लिया था, देन इट्स बैक टू द होल थिंग मैन. आई डोंट मिस इट. द फैक्ट इज आई रियली डोंट मिस इट. हेलो, मेरा फेयरवेल है 5th को, लास्ट डे ऑफ स्कूल लाइफ. अरे कंग्रेचुलेशन ऑन ग्रेजुएटिंग फ्रॉम स्कूल यार सिड. ऑल राइट, लेट मी आस्क यू गाइस दिस क्वेश्चन. सोबर सिंस बर्थ, बहुत बड़ी अच्छी बात है. साथ में नाचना था, एग्जैक्टली साथ में नाचना था. नाउ हाय, ज्वाइन बटन काम नहीं कर रहा, आई डोंट नो जयदीप. एक ना भी लिंक आएगा इसी स्ट्रीम एलिमेंट से, उसमें मेंबरशिप लिंक होगा, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हो. एनीवेज, सो हाउ वुड यू गाइस रेट योर 2023? अपने 2023 को आप लोग क्या रेट करोगे? फ्रॉम जनवरी ऑफ फर्स्ट 2023 टू डिसम्बर 31st 2023. एंड लाइफ में यार, मतलब फुटबॉल के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें होती है. एक सेकंड में आता हूँ. It's a bit cold today. सॉरी, इट्स अ बिट कोल्ड यार, थोड़ी बारिश हो गई थी रात को. सो या, ऑल राइट, व्हाट आर पीपल सेइंग? सो SL Shadow says 7 on 10. Great. That's a nice one. कम सब्सक्राइबर्स, अच्छा सब्सक्राइबर्स बेहतर है. मेरे को तो यार आई एम हैप्पी विद माई ग्रोथ टू बी ऑनेस्ट. 1 on 10 says DG. All right, DG. I'll start this and I'll ask you what happened. 5 on 10 says Tracy. All right, I'll ask this as well. 7 on 10, 7 on 10 standard. Did I accomplish my goals for this year? No. But did I look after my physical and mental health? Not at all. But did I maintain a proper diet and sleep schedule? Mr. Popo, I feel you. I feel you. Shit year says Lucky, okay. 8.5, damn. Highest, I think, for now. 6 on 10, 5 on 10. It was amazing, did a lot of things. It was amazing. 6.97 on 10, 6 on 10. All right, there's plenty of stuff going on. All right, 4 on 10, 3 on 10. हम करते हैं ये. I'm asking how your 2023 was. How was your 2023? हाँ यार, फुटी टिक टैक टो खेलते हैं हम. टिक टैक टो खेलते हैं हम. हु आर ये वगैरह सब खेलते हैं. बट आज आज आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट एवरीथिंग. सो yesterday, before and after game, I managed to complete 2 chapters. Thanks for deep work advice, and genuinely think I haven't studied like that. Thank you so much, yaar. Miran. It's literally, trust me, unless you are like creating something new or you're inventing something, na, no thing in the world, no subject in the world requires more than 2 hours of deep work. एंड आई प्रॉमिस यू, वो 2 आवर के डीप वर्क इज मच मोर देन वो आप जो लोग नहीं होते आपकी क्लास में, या फिर पीपल हु आर लाइक मैं 8 8 घंटे पढ़ता हूँ. 8 घंटे कोई नहीं पढ़ता है. वो क्यूमुलेटिवली 8 घंटे में 2 घंटे का ही काम होता है. एनीवेज, सो लेट्स गो ओवर दीज थिंग्स. डीजी भाई, इफ यूर स्टिल हियर, और ट्रेसी, both of you, if both of you are here, बता दो why were your ears 1 on 10s and 5 on 10s. किसी ने लिखा था 3 on 10, एक ने लिखे 10 on 10. हर्षवर्धन, आई लास्ट यू अबाउट योर 10 on 10 एज वेल. अजरा अजहारुल इस्लाम भाई, आपका ईयर 3 on 10 भी क्यों गया था? आप बताइए कि why was your year 1 on 10 और 3 on 10? If I had to rate my year, I would say it was, outside of football, I would say it's a very good year actually. I would rate it as 7.5 on 10, man. I would rate it as 7.5 on 10. Why? Because I think academically I made some progress in life. I think socially I made a lot of progress in life. I think it was a very good year for my relationship as well. इतने साल एक साथ रहने के बाद हमने पूरा एक साल लॉन्ग डिस्टेंस चलाया 2 सेपरेट कंट्रीज में, एंड इट वर्कड आउट रियली गुड. नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम्स, like nothing extraordinary. I think I
Did a lot for my physical health as well. Mental health के लिए भी बहुत काम किया. I think I really improved as a person, you know. There were a lot of issues जो मेरे को लगता था मैं face कर रहा हूँ personally in terms of I don't want to go into the details of what it is because it's very personal, but I think मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ों मैंने बहुत सारे अपने बैड हैबिट्स को एक्सक्लूड कर दिया, मैंने बहुत अच्छी गुड हैबिट्स को इनकलकेट कर लिया. आई थिंक दैट्स रियली रियली नाइस. बॉडी शांतनु मैं तो पढ़ता ही नहीं. पढ़ लिया करो भाई, पढ़ लिया करो, अच्छा होता है. 4 on 10, 8 on 10, ऑल राइट ऑल राइट. हर्ष, आपका 2 on 10 क्यों गया था? तो आप भी बताइए आपका 2 on 10 क्यों गया था? 8 on 10 had some of the best times of my life with her, but 18 December को she left. Other than that, studies भी हुई and I lost weight. Amazing अंशुल, कोई बात नहीं. हर एक whenever a person makes their way out of your life, a new person and better person will come out of into your life. 11 क्लास में सबसे कम आया मार्क कंपेयर टू प्रीवियस क्लासेस. बहुत गाली गया हुआ फुटबॉल रात में देखने के लिए. Hey Tracy, come on, man. Look, 11th is definitely a significant jump from 10th. But I promise you, if there are people in your class who can do it, if people in your class can hack 11th, I think you can as well. And I think कर सकता है तू, कर सकता है. मतलब जितनी जिगर से तू फुटबॉल देखता है, फुटबॉल के बारे में सोचता है, उसमें से अगर तू 20% एफर्ट भी पढ़ाई पे लगाएगा, बहुत आगे हो जाएगा. शिखर says, I made no progress. I think we all grow as people, शिखर. If I have to ask you, शिखर, कि आपने इस साल में 3 क्या चीज़ें सीखी? एंड अगर आप 3 चीज़ें भी नेम कर सकते हो, I think you have progressed a little bit. Now, the more you can name, the better it is for you. You always learn and live and you grow. And I think if you have figured it out, then अच्छी बात है. I don't usually agree with this notion that I've made zero progress. Of course, if you had goals like I want to lose weight or I want to build muscles and उस area में नहीं किया, ठीक है. Then I can understand. But yeah, if I want to say a number 1 out of 10, 2023 is just one number. Okay. Uh, that progress includes Daksh found me. Of course, of course. Extreme anxiety ho gayi due to career, lost a relative. Friend effed me over. Anxiety made me question everything I did. Eventually come out of it. That's why 1 on 10. I am so sorry for your year, man. Yeah. Life, career, provision, पैसे ये सब तो एंग्जाइटी कांस्टेंट देते ही रहते हैं. I'm glad you came out of it eventually. Losing a relative is never easy, man. And इसलिए मैं कहता हूँ कि that sometimes, everyone has their 1 on 10 years for some reason or 2 on 10 years for some reason. But, the reason I'm making you guys share this is to see sometimes if people are celebrating a success, right? If somebody says कि दक्ष भाई actually मुझे 10% का increment मिल गया and you say कि मेरा actual दक्ष भाई year 4 on 10 गया, but you also realize अरे मेरे increment तो मिला, and you realize it's something worth celebrating. The same thing is like it's very unfortunate DG Bhai went through this, all of it. But it makes me empathize with him. It makes me appreciate him that he came out of it. But it also makes me grateful ki God protected me so much from so many things that could have gone wrong. I've thankfully, God willing, have had no major injuries. I've had zero setbacks this year. There have been issues, there have been troubles in life, in terms of time management, in terms of pressure, in terms of anxiety of my मतलब जो भी मेरी anxieties हैं. But thankfully इतने major setbacks नहीं हुए. And DG, I'm very happy and proud of you that you came out of it, man. I hope 2024 is like completely different for you. And I hope everyone in and around you, they have great health. I would say 4 on 10, apart from academic comeback, nothing was going wrong. And I think that you should celebrate your academic comebacks. But koi baat nahi. You have a nice solid foundation to build upon. साक्षी भाई, आप वहाँ कितने टाइम से हो? साक्ष भाई, अच्छा साक्ष भाई है. पता नहीं यार, अब तो सितंबर 22 में आया था मैं. सो इट्स बिन अ ईयर से ऊपर हो गया, 1.5 साल होने वाला मेरे हिसाब से. मेरी पार्टनर, शी इज इन इंग्लैंड एंड आई एम इन डबलिन इन आयरलैंड. सो इट्स वी नॉट दैट फार अवे इन द सेम टाइम जोन, बट इट्स स्टिल अ डिफरेंट कंट्री. इट्स नॉट ईजी टू ऑलवेज गो. Rohit says, I was diagnosed with an autoimmune disease and arthritis, had breakup, got no job, everything went to shit. Rohit says, Arey yaar, I'm so sorry, Rohit. Is this disease just manageable? Is it curable? I hope it's not bad, but I hope अब ठीक हो जाए. अगर नहीं होता, I hope you can manage it well, and I hope it's never a hindrance in your life. But God always tests उनके सबसे strongest soldiers को. भगवान हमेशा उनके सबसे strongest सिपाहियों को टेस्ट करता है. And I hope
ये टेस्ट से आप अच्छे से निकले एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर आपका बहुत बेटर जाएगा. 10 on 10 बिकॉज आई गॉट एडमिशन इन IIT Delhi. और कंग्रेचुलेशंस, गुड मार्क्स इन 12th बोर्ड एंड गॉट ऑफर लेटर इन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंडन. आई एम सो प्राउड ऑफ यू मैन, हर्षवर्धन भाई. बिग डब्स फॉर हर्ष, बिग डब्स फॉर हर्ष. ऊपर लिखा देखो, तेरा तो ले लिया मैंने. How did you improve as a person? You're already 10 on 10. Shut up, bro. It was a roller coaster. Had some mental issue from graduated from my college, became an engineer from UK, blah, and couldn't go into depression. But still, couldn't go, got into depression, but still going strong. Let's say 7 on 10. Pratik, trust me, man. I same thing happened to me. My undergrad में UK जा सकता था. I couldn't go. I could have gone to Estonia for my masters. I couldn't go. Pandemic आ गया. And then finally I am here in Dublin. Trust me, you will eventually be where you have to be in life. अरे वकार ने 20 memberships gift करी हैं क्या? Where is it? 20 memberships gifted by Vakar. Happy New Year, Vakar. Thank you so much for that gift. And 20 लोगों को जो memberships मिली है यार. Thank you so much. Congratulations कर दीजिए वकार का and everything यार. Big W's for Vakar. Happy New Year, Vakar. I hope your year went well. I can't see your chat if you have started, but अब मैं नीचे आ गया हूँ. I've caught up with the chat. Stream off. Says Karthik bhai. Which channel do you think is the most underrated in 2023 and will explode in 2024? Underrated, huh? It depends on the kind of content you're into, right? Like I think if you go for Muktesh ka content, for example, ठीक है, Muktesh का content की vibe अलग है. But I think I genuinely believe, I think even though they are growing at a decent pace, I think Manas and Nidhi Menace and the Monk, these guys will explode. They will. It's just bound to happen sooner rather than later. Abhi I think they're at 20 something K, man. Um, but it won't surprise me if they end the year at 50-55K. They are that good. उनकी vibes अच्छी हैं, उनका content अच्छा है. They are hardly ever like, मतलब I've never seen them being snivelly and too sneaky about their content. या ठीक है, मतलब हर opinions सबके होते हैं. Like they might have whatever opinions they might feel. I think काफी ज़्यादा explosion होगा. Uh, and they deserve it also, man. Who else? There are a couple of channels I really like. I really like Being Sarangi. मैंने उनके साथ एक वीडियो करा था. I think they will grow as well. फिर I think sporting standpoint, they do a lot of streams, man. I almost always see them online. तो मेरे हिसाब से तो होगा. अरे नहीं यार, you can't get aired, भाई. You can't get aired. So Manas Nidhi, Mohak का भी, I think Mohak is due for a big break. I think the day he makes that move now, I think he's trying to move to Delhi. The day he makes that move and he content इतना regular है बंदे का, I think वो अपने element में आ जाएगा. The only thing is I think he also understands कि 2024 में उसकी शादी भी हो रही है. उसके बाद वो कैसे मैनेज करेगा. तो I think तो यार he will put his all in 2024. I think वो अपना unscripted चला रहा है, वो clickbait चला रहा है, वो 1 MUFC चला रहा है. आई थिंक इट विल एक्सप्लोड यार मेरे हिसाब से. सो मानस निधि, मोहक का आई थिंक विल बी अ ह्यूज जंप. मानस निधि का आई थिंक विल बी ह्यूज जंप. एंड जो अंडर 3K टाइप्स वाले subs हैं, आई थिंक स्पोर्टिंग स्टैंड पॉइंट एंड बीइंग सारंगी विल वर्क. Leaving football aside, 7 on 10, halke phulke financial issues, nothing major. Good, Puneet, good. Uh, my streams are without abuses and hate. भाई if somebody really it takes a lot to tick me off. ठीक है, मतलब मेरे को गुस्सा दिलाना बहुत मुश्किल है, बट कोई लोग आके दिला देते हैं एंड तब मैं बहुत गंदा हो जाता हूँ. My biggest issue, which I'll tell you, not this year, but a few years ago, I think 6 years ago, I got over this, was my anger issues. I was very angry. Thank you so much. मैं भी इसको address करता सौरभ. I got used to get very angry very quickly. एंड एक पॉइंट पे मैंने अपने एक फ्रेंड की ना शिन शैटर कर दिया था. मतलब जो पूरा शिन वाला एरिया है, आई ड्रॉप्ड हिम ऑन अ टेबल बिकॉज ही मेड मी एंग्री एंड लड़ने लग गया था मुझसे. सो आई शैटर्ड हिज शिन एंड दैट वाज नॉट नाइस एट ऑल. एंड सो 6 years is also, it's not even 6 years now, it's 8 years probably. So getting over my anger issues is one of the biggest achievements I've done in my life. Another achievement I would say that I have overcome for a large part is, I think I've gotten my habit over drinking. I do not miss it at all.
Like if I want, I only drink now not because I crave it, because I think कि चल आज है पी लेते हैं. You know, एक चीज होती है कि आप किसी चीज के स्लेव होते हो, एंड दूसरी चीज होती है that you control when you will do something. Mohak will explode, he is getting fat as fuck. मैं नहीं बोल रहा कुछ उसके बारे में. Behind YouTube, you are an MMA fighter, sir. Subhan nahi. Anyways, let me address the super chat first, man. Worst year of my life. Are, I'm so sorry. Are, I'm so sorry. Lost my mom to cancer. Fell out with one of my closest friends in really bad physical and mental health. Still smiling, hoping for the best. Happy New Year, everyone. भाई सबसे पहले ना सब सौरभ को Happy New Year बोल दो. Drop what you're chatting. Drop what you're thinking. Just पहली बात तो wish सौरभ a Happy New Year, and wish, if you pray, if you have a murti, if you have a mandir in your room, just pray life goes well for Saurabh. All right? Please, Saurabh के लिए थोड़ा pray करिए. And Saurabh, I'm so sorry you had to go through this. It's never nice to have what. It's never nice to go through what you have. And trust me, if I was in your place, I would have probably collapsed. The fact that you're still here, the fact that you're still moving in life is absolutely, it's respect worthy, man. You have my respect. Um, and I really hope, Saurabh, that this year is like a complete turnaround, and I hope every sort of good thing that comes in your life, uh, everything that can good in your life जो आपकी life में हो सकता है वो हो. But thank you so much for the contribution, man. I will pray for you myself. I will personally pray that things go so well for you this year. Life is going to be so nice for you. I promise you it will be. Um गुरप्रीत, थैंक्स फॉर द कंट्रीब्यूशन यार. जस्ट फॉर द पॉइंटर्स, चिल स्ट्रीम पे हम यूजुअली फुटबॉल करते नहीं हैं, तो आई वुड थैंक्स फॉर द कंट्रीब्यूशन, बट आई वुड अवॉइड टॉकिंग अबाउट फुटबॉल. योर ईपीएल टॉप फॉर प्रेडिक्शन दिस ईयर एज ऑफ नाउ, यार इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल सीजन यार गुरप्रीत, बिकॉज क्रिसमस विच इज लिटरली व्हाट 7 days ago वी वर टॉप ऑन क्रिसमस, एंड नाउ वी आर फोर्थ विद द व्यू कि हम स्पर्स से एक पॉइंट आ गए, एंड कुछ भी हो सकता है यार. ये फेस्टिव पीरियड हमारे लिए थोड़ा टफ रहा है. I am a little bit pessimistic now. So my top four would be right now City, Liverpool, then Arsenal, and then Spurs. I think ये top four रहेगा मेरे हिसाब से. Um, can Arsenal come back? I personally think that अभी तो मेरे मुंह से आप लोग टाइटल की बात सुनोगे नहीं जब तक हम 3 पॉइंट पीछे ना रहें. Until game week 33. उसके बाद से I will probably think कि हम कर सकते हैं. बट अभी तो मैं कुछ सोच भी नहीं रहा. हैप्पी न्यू ईयर रेनेसू, हैप्पी न्यू ईयर. एंड जिसको भी मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, आप ज्वाइन इधर से कर सकते हैं. जिसको मेंबरशिप गिफ्ट करनी है, आप डोनेट वाले बटन से भी कर सकते हैं. यू कैन ऑलवेज बी नाइस एंड काइंड टू मी, टू एवरी वन एल्स. एंड या वकार से क्रिश को पढ़ने जा भाई. आई ऑनेस्टली बी टेलिंग यू गाइस, मैंने आज स्ट्रीम अभी इतनी जल्दी इसलिए करी है बिकॉज आई वांट टू स्टडी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. I want to start my year as I mean it to go on. And this year I want to completely explode academically. मैंने अच्छा सा टाइम दिया इस पूरे साल अपने YouTube को, एंड उसका मुझे फल दिख गया. आई हैव नॉट बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट गाय. बीच में मे बी एक स्लम्प सा आ गया था, बट आई थिंक आई पिक्ड इट अप एंड आई रियलाइज कि कैसे कैसे ग्रोथ करनी. देयर आर सम थिंग्स आई हैव टू डू जो आई थिंक हो भी जाएगा. आई वॉन्ट टू स्टॉप स्मोकिंग. कैसे करें? ओके, आई विल गिव यू अ चीट शीट जो मैंने अपने एक फ्रेंड को बताई थी, एंड इट डिड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम स्मोकिंग बट इट रिड्यूस्ड इट मैसिवली. फ्रैंको की आत्मा, आई विल से दिस वन थिंग. ओके, स्मोकर्स की सबसे बुरी आदत ये होती है कि दे फाइंड एनी एक्सक्यूज टू स्मोक. एंड व्हेन आई से एनी एक्सक्यूज, आई मीन लिटरली एनी एक्सक्यूज. आई हैड अ फ्रेंड, स्ट्रेस है, स्मोक करना है. एग्जाम अच्छा गया, स्मोक करना है. ब्रेकअप हो गया, स्मोक करना है. एक नया क्रश मिल गया, स्मोक करना है. सुबह प्रेशर नहीं आता, स्मोक करना है. रात को नींद नहीं आती, स्मोक करना है. एंग्जाइटी हो रही है, स्मोक करना है. आई एम टू चिल, स्मोक करना है. राइट? एंड दैट्स द होल थिंग. You smokers find any excuse to smoke, and I will just say that you need to like let go of all these things. You know what, Tracy, I have actually heard this also. I've actually heard this. So I will talk about deep work as well, Siddharth. We'll talk about deep work as well. So Franco ki Atma, I will say that for the smoking thing, the first thing you should do is whatever your input of smoking is. Let's say you smoke 10 a day. I don't know how much you smoke, okay? But let's say you smoke 10 a day. Reduce it to half. Just immediately reduce it to half and see how much
अभी पहले हफ्ते में तो इट्स गोइंग टू बी द टफेस्ट टू रिड्यूस इट टू हाफ. I'm not saying completely go cold turkey and everything, although people prefer cold turkey. I will say quit it, उसको हाफ कर दो. हाफ करने के बाद उसको 2 हफ्ते तक एटलीस्ट मेंटेन करो. आइडियली 3, बट ट्राई फॉर 2 weeks. And if you can do it for 2 weeks, then you come back to me in a stream or DM me somewhere and just be tell me कि मैंने हाफ कर लिया और मैंने 2 हफ्ते मेंटेन कर लिया. Then we'll go on उसके आगे क्या करना है. योर ईपीएल टॉप 4 predictions दिस ईयर हो गया. पुनीत हो गया. जस्ट विश माई न्यू ब्लॉग एंड यूट्यूब प्रोजेक्ट गोज वेल. अ बिट नर्वस बट देख लेंगे. पुनीत, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्लॉग, बेस्ट ऑफ लक फॉर यूट्यूब, बेस्ट ऑफ लक फॉर एनीथिंग. You will always be welcome here. Thank you so much and best of luck to you भाई. सब लोग बेस्ट ऑफ लक प्लीज पुनीत को विश कर दीजिए. फूफूबाजी छोड़ क्या है फूफूबाजी छोड़ दो. दक्ष, गिव मी सम टिप्स. आई एम फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग. हाउ टू मूव टू यूरोप फॉर मास्टर्स, हाउ टू स्टार्ट प्रेप. यार देखो, देर आर 2 ways to get to Europe, okay? And depends on your circumstances. Sometimes for some people both ways are available. I would prefer you choose way number one. But there are 2 ways to get to Europe or any other place in the world outside of India. ठीक है. Number one is you be so unique and talented in your undergrad. जैसे अगर आप engineering कर रहे हैं, have projects. अगर आप computer science कर रहे हैं, it's the easiest. You have to have your GitHub repository always updated and contributing and whatever. बहुत सारे people have like tons of video on how to be a good engineer in this field. Trust me. आप YouTube पे जाओगे कि how do I become a great mechanical engineer, civil engineer, this stuff. There will be people making घंटे घंटे की videos on how to be a successful person like this in this field. Follow that, and if you're unique, universities will be running after you to hire you. टू बी कि आप आ जाओ, हम आपको स्कॉलरशिप दे देंगे. बिकॉज आउटसाइड यूनिवर्सिटीज की सबसे अच्छी बात ये होती है, दे ऑल वांट दैट एक्सीलेंस. बिकॉज इन द ऑफ चांस यू बिकम समबडी अमेजिंग. मान लो आप कंप्यूटर साइंस करके यू बिकम समबडी सो अमेजिंग दैट यू डेवलप अ न्यू एल्गोरिथम और you improve the efficiency of something, or you are at the forefront of new knowledge, then they want your name to be associated with them. तो but number one way is to be unique and talented, and उसके लिए पूरे साल 4 साल मेहनत लगती है to be completely different. उसमें you have to make sacrifices where you might not see your friends as much, where you might not go for that छोले भटूरे वाली lunch break पे trips as much, where you might not meet your friends for that end of the semester vacation and stuff. मेहनत तो लगेगी, but it'll be worth it in the end, I promise you. But don't forget to enjoy life as well. The second way is, if you have money, you can just pay and go. And if you're both talented and you are rich, then you can use any of those ways. Okay. No, not the 21-day thing. Let me see if I missed any super chat. All right, पहले हम super chat लेते हैं. Big hug to everyone, guys. Wish you a bucket full of success. It feels good to hear everyone's achievements and milestones. And this is what, guys. Chill streams पे हम बहुत ज़्यादा बकचोदी भी कर सकते हैं. But I want us to all look at each other, look at ourselves उसके बाद, to see कि हम लोग ने actually बहुत सारी चीज़ें achieve करी हैं. Because for some people ना, things which you might be underplaying, कि दक्ष भाई actually मेरे सिर्फ 88% ही आए हैं. And you might be seeing somebody with 85% saying, I had a fantastic year, Daksh. I was so down, so bad. You kind of appreciate yourself a little more. You see other people and you be a little more grateful for your own life and everything. Love from Pakistan, Italy, and City fan. बहुत बढ़िया यार. Congratulations. Now, Saurabh, you have my respect, man. And yes, I will always be with you guys. And I'm happy you are a part of this channel. Thanks again for the contribution. Unfortunately, it's the only way you can guarantee that I see your messages. But अगर किसी ने और भी well wishing messages दिए, I love you all. Renisu, Shantanu, Ayan, Vakar, किसी को भी air नहीं कर रहा हूँ. It's just there's a lot of people. I'm trying my best. And yeah, Saurabh, I hope you have a much better year. I hope next year when we do this stream as well, we hear so many better news from you. Chalo, deep work. Now, deep work, I say, is work जो proper work होता है. प्रॉपर वर्क माने, अगर मैं पढ़ाई करने बैठा हूँ, इवन इफ आई एम स्टडिंग फ्रॉम अ कंप्यूटर ना, अगर आपको पता है कि आपके पास कंट्रोल नहीं है, यू विल चेक ट्विटर, यू विल चेक फेसबुक, यू विल चेक यूट्यूब म्यूजिक, यू विल चेक यूट्यूब, यू विल चेक ऑन एनीथिंग, यू विल पिक अप एवरी नोटिफिकेशन. नो, द आइडिया ऑफ डीप वर्क इज कि आप सारी चीज़ें, कैसे उमेश भाई, नाइस टू सी यू हियर, फुटबॉल 26 फ्रीक, आयुष, अभी, एवरीवन, हेलो 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 जो भी बोल रहे हैं. द आइडिया इज दैट यू
discard every possible distraction and you do 1 hour at least of deep work, right? अगर आपको पता है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मिजान कह रहे डोंट टेक शॉट एट मी, Debanjan 7.5. So deep work is you remove every possible distraction. You do less hours of study but more impactful study. Simple सी बात है. अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो बट आप उसमें फोन भी चेक कर रहे हो और अपना यूट्यूब भी चेक कर रहे हो एंड आप गाने भी चला के सुन रहे हो, it's absolutely nothing. Deep work means no music, no music, no phones, no TV, no YouTube. If you're doing a lecture on YouTube, then you should download that lecture offline, save it offline. There are so many ways to download a YouTube video. Put your computer on do not disturb mode, ठीक है, एंड उसके बाद वो वीडियो ऑफलाइन व्यू करो. अगर आप नोट्स अपने डेस्कटॉप से पढ़ रहे हो या पीसी से पढ़ रहे हो, आईपैड से पढ़ रहे हो, उनके प्रिंट आउट निकालो और ना प्रिंट आउट से पढ़ो, ठीक है. प्रिंट आउट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन 20 रुपीज. एंड इफ यू थिंक यू हैव टू रीड एन एंटायर बुक, चैप्टर बाय चैप्टर भी कर लोगे, इट्स फाइन. डीप वर्क में आप ज्यादा पढ़ाई सॉरी कम घंटे पढ़ाई करते हो बट यू डू मच मोर इम्पैक्टफुल वर्क एंड आई थिंक दैट रियली रियली हेल्प्स. नो, आई डोंट थिंक पढ़ाई will music will ever work. Some people say white noise, background music, cinematic music really helps me concentrate. I don't think that will ever constitute deep work. वकार ने फिर से membership join कर लिया. Thank you so much वकार for being a member again यार. Thank you so much. Thank you so much. Now, सब ने अपने काफी लोगों ने अपनी दे दी हैं ratings for their ears. 2 on 10s among many bad things suffered a jaw disorder. Damn man. Permanent and not curable. I'm living with it now. The pain has become distraction and left my studies for around 2 months. Have you, matlab, you've gone to the specialist and everything, Shimam? I'm so sorry that happened, man. Again, lucky. Again, thank you, God. You just never know, yaar, things that happen to you and कितनी चीजें आपके साथ हो सकती है. Uh, yeah, it's just super problematic, man. And I'm sorry you had to go through this, but देखो, man, we have I genuinely will tell you, we have people in our community जो मेरे से reach out करते हैं. They tell me about physical disabilities. Some people tell me about mental disabilities that they suffer from and injuries and ये सब वगैरह. So you're not alone. And trust me, a lot of these people are doing well in life. They are taking care of themselves or their family or a partner or whatever it is. And so you can do it as well. I have zero doubt that you can always overcome this. पेन आपका डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा, नो प्रॉब्लम. आई नो यू विल लिव थ्रू इट. आई नो यू विल गेट मच 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 बेटर. मेरी एडिक्शन नहीं छूट पा रही है, पढ़ाई पे फोकस नहीं हो रहा है यार. एडिक्शन का तो आई कैन नॉट हेल्प यू. आई एम नॉट एन एडिक्शन काउंसलर एंड एवरीथिंग, सो आई कांट हेल्प यू. फॉर पढ़ाई, अगेन फोकस का भी मैंने आपको डीप वर्क वाला बताया. आप लिटरली आधा घंटा पढ़ाई करके देखो, सीरियस पढ़ाई, आपकी जिंदगी बदल जाएगी जो आपने उस आधे घंटे में कर लिया था. 0 and 10, first time in my life I didn't do well in exams and United keep hurting me. Life is more than football, but I understand you. Thank you so much, man. And special one ko bhi, yes, man. More power to everyone who's going through something. Now, every year we make resolutions, yeah, guys. 2023 में आपके क्या resolutions थे and आपने कितने resolutions को काम से निकाल लिया? मतलब how many resolutions did you actually take off and कितने resolutions आपके delusions बन गए? दिल्ली कब आ रहा हूँ मैं? 6th को आ रहा हूँ. In my worst year of my life, left PhD, took a 3-month long ass break from work after 12 years, went through all the emotional phases, but still 10 on 10 on how I dealt. Trust me, Vakar, all the toughest years of your life make you the best version of yourself in the next year. Bhai, I remember 20, 2016 to 2019 was the worst phase of my life. The worst phase of my life. Okay, not 2019 tak, but 2016, 2015, 2016 was the worst phase of my life. The worst phase of my life. Bad breakups, a lot of self-esteem issues, college dropouts, um, zero social circles, a broken relationship at my house. बहुत सारे issues थे मेरे, ठीक है? And despite all of that, I mean, I think that year built the most character I ever had. It was a lot of hard work, a lot of resilience. I ended up going to Stanford a year later. But that aside, also, man, I think there were so many things. Uh,
उस साल ने मुझे सिखाई। एंड अब जब भी मुश्किल टाइम आता है ना, अब तो खैर उस साल को बहुत टाइम हो रहे हैं, 10 साल होने वाले हैं उसको। क्रेजी हाउ टाइम फ्लाइज। बट जब भी मेरे को उसके बाद प्रॉब्लम होती थी, ऑलवेज यूज टू रिमेंबर 2015 2016 कितने बेकार साल थे, एंड मैं उससे कैसे अच्छे से निकला था। सो आई गेस दैट रियली हेल्प्ड मी। 8 on 10. Qualified as CA. Amazing. Bought a new crib, but बंदी धोखा दे गई, कोई बात नहीं। She was not meant for you, trust me. 7 on 10. Completed engineering from government, got placed in TCS, went through heartbreak, no regrets. Had the travel fun year overall, great. Knox, you will have even better years this year, I promise you. Love you a lot as well, Yarvakar. I'm here, Dakshbhai. Happy New Year. Hope this year goes better for all of us. Arey, of course, man. Of course, it will go better for all of us. My resolution was to control aggressiveness, and I succeeded. Still bowls, you are my G. You are my G. My 5 on 10 says Gaurav. Gaurav, इसको हम 5 को 8 on 10 बनाएंगे इस साल. My resolution was to write a story, and now I've written 3 chapters and they are great. We'll send you after exams. Lucky too. You are also my G. Certified G. Was a decent year, especially joining university, but I made some really nice friends and had a good year. And now we moved to the end sems. Come on, Miran. End sems ko phorna hai main. Which degree did I drop out? I mean, I still ended up finishing the degree, but I had to drop out from college at one point of time because I was so bad. Ireland में कौन सी यूनिवर्सिटी से हो? UCD, University College Dublin. 2010 was my worst year. Suffered from a heart disease and when I was 8 years old. Damn. But now look at you, Shashank. You're still here. You're still strong. एंड 2010 में आप 8 साल के थे, अब आप 21 साल के हो गए हो, नहीं 22 साल के हो जाओगे इस साल। कंग्रेचुलेशन। Anshdeep, I can't show that comment on screen, but I'm so proud of you. Apparently, if you show that stuff on screen, then you get the yellow dollar. Um, Failed to qualify for NEET, trying again. We all try again, bhai. We all move again, over and over again. Delhi meetup, यार मेरी फैमिली के साथ ही मीटअप हो रहा है मेरा भी, तो आई कांट हेल्प इट राइट नाउ। डिसेंट स्पेशली ज्वाइनिंग हो गया। Bhaiya, I have applied to Ivies, get into Harvard, Yale. I found new love for psychology, doing research. Come on, Pratik. Let's go. COVID changed my life, made me introverted and depressed. Shikhar. I will tell you one thing in life, all right? Nobody is born with the natural skill of being extroverted or being social, all right? I always repeat this. When you were a kid, your parents dressed you up and sent you to your neighborhood ki birthday parties and your school friends ki birthday parties. Why? Because parents, that is how we get ट्रीटेड एंड फेमिलियर विद सोशल सिचुएशंस। अब आपके माँ बाप आपके घर पे नहीं आके आपको कपड़े पहना के बोलेंगे चलो इस दोस्त के घर से जाओ मिलने। नो, यू हैव टू मेक दैट एफर्ट योरसेल्फ। यू हैव टू ड्रेस अप, यू हैव टू कॉल अ फ्रेंड, यू हैव टू से चल एक आधे घंटे चाय के लिए मिलते हैं, या फिर 1 घंटे इस ड्रिंक के लिए मिलते हैं, या चल आज एक डिनर करने चलते हैं। एंड यू हैव टू डू इट। यू हैव टू डू इट। देयर आर सो मेनी टाइम्स आई कैन सिट इन दिस रूम, प्ले वीडियो गेम्स और स्टडी और डू यूट्यूब, whatever, and it'll give me something. Study might give me academic benefits. YouTube might give me some, I don't know, connection with you guys plus money. Gaming can give me some sort of dopamine. But trust me, I there are days where I have to get up, dress up, and go to the pub and meet my friends because of two reasons. One, it makes that human contact, and that human contact is the best dopamine in your life. And two, लोग जब कब काम आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. And so there are so many times when I've been in trouble here, not like big trouble, but when I needed something, everyone here at the pub helps me out. And sometimes you just have to do it, man. Sometimes you just have to go out. And introversion is not a disease, neither is extroversion some sort of blessing. You can be introverted yet social. And your depression is not, I mean, it is depression probably, but my point is that unless you surround yourself with people, this will not go anywhere. Get up, the first thing you should do is go out. Don't have to meet people, just go out. The first thing you should do. उसके बाद दिन में मिलते रहो लोगों से. BA but now thinking to switch, करो यार. There are just type in Yash, YouTube पे डालो how to become a web dev. Simple सी बात है. Kind of proud of it. In January new relation end होगा, July में ended because she's supposed to be married in 2024. She's my best friend, emotionally sorted, her and myself. Low key flex. Amazing यार वकार. ये सारी चीजें ना, all these things build character. It's tough, it's disappointing, but this is how it is. Nilmendra Rai says 0 on 0, so 0 resolutions. Was a decent year, especially joining uni was scared, but I made some really nice friends and had good year. But now we move. हो तो गया ये तो हमने, I think I've taken this. How to approach girls? I am the worst person for this advice, but I will just say don't treat them as some
alien species. They're also humans. Treat them how you would treat any other person. That's what women usually want. um, no resolution this year, so now I'm only making one resolution, that is sticking to my principle, being 100% honest and fair share of kindness, and no matter what. You know what, I think that is an incredibly tough but also an important resolution that everyone has, should have. I will just say, if you have no resolutions, strive to be honest and kind. If you have no resolutions, I think those are great goals जो हम कर सकते हैं. um, हो गया. Decent tier Delhi meetup. All right, Pranav, great. Want to watch every match of my team. New fan, बढ़िया. Study good with 0 fee to clear parents' burden. बढ़िया. To isolate myself and know about myself, then know about others. All right, perfect. For number 3, I can recommend you start getting into meditation. And दिन में आधा घंटा ना सिर्फ अपने साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लिए बिठाओ. जब आपका दिमाग अपने बारे में सोचता है, आप बहुत कुछ सीखते हो. 2024, I want to crack JEE. Amazing. Stream का notification emailized Kraken. Unfortunately, I can't help you with that. If you are a part of the Discord, which you are a part of the Discord. There's an updates channel there. आप वहाँ पे join कर सकते हैं. And जो उन लोगों को membership मिली है, you can join the Discord on the एक वो membership tab है. Community posts के side पे membership tab है. वहाँ पे आपको एक Discord link मिल जाएगा. ऑलराइट. डीयू ने न्यू ईयर पे सबसे हार्ड सब्जेक्ट्स का एंड रखा है एंड इट वाज टफ. नाइस वे टू स्टार्ट देयर. Taran, we're through it, man. We're done. We're off it. You've done it and everything. You give meaning to every event, whether positive. Everything teaches us something, man. 4 out of 5. Got a good job with high salary. Got a girlfriend. Amazing. Shifted to Scotland. Whoa. Enjoying my life. Just some setbacks. Setbacks are always part of life, man. No life is ever like positive, positive, positive. We always have नीचे नीचे ऊपर ऊपर. वी आर गोइंग ट्रॉफी लेस दिस सीजन. कोई बात नहीं यार, हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ट्रॉफी लेस चले जाएंगे. दुख होगा, दर्द होगा, थोड़े से हंसी मजाक हो जाएगा हमारे ऊपर. फिर लाइफ आगे बढ़ती रहेगी यार. You couldn't socialize because of your pimples. Trust me, you need new friends. And अगर आप के फ्रेंड्स ने कुछ नहीं बोला है और आप खुद ही के सबसे बड़े दुश्मन हो, then I think you need to change yourself. Because brother, I have had friends who don't have, like, जिनके पास एक आंख नहीं थी. ठीक है, मेरे ऐसे ऐसे दोस्त भी रह चुके हैं. So pimples is a, come on man. City Font says, I used to hate you, but now I like you. I think that is my biggest achievement. If I have converted some people to believe that I am a nice person, number one, appreciation to you, because you have given me a chance, and I'm grateful that I could change your mind. Thank you so much. In which university college you completed undergrad? In this college in Faridabad called Manav Rachna. I finished my undergrad degree from. Thanks for subscribing, यार Kang. भाई दोस्ती में कौन पिंपल देखता है यार? Exactly my point. Exactly. To be honest, lockdown phase was great for me. It's the worst for me. Tracy is dropped 12 kgs. Amazing. Cat exam didn't go as planned, but that's life. Yeah. Revived many old relationships. No complaint. So proud of you, man. What are my resolutions for 2024? For my 2024 resolutions, I will, number one, clear my transfer assessment panel in my first attempt. So a transfer assessment panel is, guys, in my university PhD cycle, कि आपको अपना फ्रॉम अ जूनियर रिसर्चर, दैट इज समबडी जिसका एक सुपरवाइजर है, टू एन इंडिपेंडेंट रिसर्चर बनना है. सो गोइंग फ्रॉम स्टेज 1 ऑफ योर PhD, जहाँ पे आप सिर्फ पढ़ रहे हो एंड एक प्रपोजल बना रहे हो, से टू अ पॉइंट वेर यू विल नाउ स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा एंड एक्चुअली स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू नॉलेज. मुझे उस पैनल को, उस इंटरव्यू को, उस प्रेजेंटेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में नेल करने की कोशिश करनी है. ऑलराइट. माय सेकंड रेजोल्यूशन is to double everything on my YouTube. Double the number of views, double the number of subscribers, double the amount of revenue, double the amount of watch hours. So doubling YouTube by next year मेरे को करना है. What am I drinking? It's just orange juice, my friend. My third resolution is to always go for a walk 4 times a week at least. हमेशा 4 हफ्ते, at least 4 times a week, I will go for a walk, and a nice long walk. I think we miss out so much when we just are not walking. Simple pleasures of life होते हैं ये सारी चीज़ें. ये, and I will commit to do at least 20 minutes of physical activity every day. Not 1 घंटा, not आधा घंटा,
not 4 ghante, just 20 minutes of physical exercise at least. Just 20 minutes of physical exercise. That's it. Simple goals, very achievable, right? If I am, there are some very challenging goals like nailing my transfer assessment panels and doubling my YouTube. There are some very easy goals, 20 minutes of physical activities and 4 times a week walk pe jana hai. So if I can nail three of them, I'll be super duper happy. 4 on 4 is a fantastic year for me. Baki, I really will keep on praying and continuing. Ooh, I will journal a lot more regularly. I think we can add that. I want to write a little more about how I feel and describe my feelings a little more. मेरे हिसाब से ये सारी चीजें अच्छी होंगी. Yeah. Another month of reloading. Thank you, Vakar. अभिजीत का luck amazing है इस channel पे यार. Uh, Saurabh, one good thing. Finally built my dream gaming setup. Let's go. See, Saurabh, there are always these silver linings in dark clouds. I am your team heater, not yourself. Okay. Well, I'm glad you heat my team, but you don't heat me. I'm just kidding. भैया क्रश को फाइनल्स के बाद अपने दिल की बात करनी अगर कहीं ज्यादा लेट तो नहीं हो जाएगा. फाइनल्स के बाद ऐसा क्या हो जाएगा? मुझे एक बात बता लकी. फाइनल्स के बाद ऐसा कौन सा मुहूर्त है? 4 on 10 became a pro coder. Everything else was shit. My friend Pankaj, if you are a pro coder, and I really take it seriously, if you say you're a pro coder, then I will say you are better than 90% of the engineers in India. Trust me, if you're a pro coder. And that I will say automatically elevates. If you are the top 10% of something in the country ना, 10 भी नहीं, मैं तो कहता हूँ pro coder होने से आप top 1-2% हो जाते हो. And if you're that high in the percentile ना, automatically should elevate your year to 6 on 10. But I don't know your circumstances. I don't know personally life में क्या हुआ है. But I am telling you should be a little more proud of your coding. But yeah, 4 on 10 है, इसको double करके 8 on 10 कर देंगे. All right, धीरे धीरे. कोई mod है चैनल पे तो प्लीज उसको अपना स्लो मोड को 45 सेकंड्स कर दीजिए एंड एवरीवन तब तक अपने रेजोल्यूशंस लिखिए. व्हाट आर योर रेजोल्यूशंस फॉर 2024? Pro coder, professional coder. Bhai, I think anyone who can code professionally and they earn a lot of money. Yeah, okay. If it's work related, then fine. I understand. But I still say if somebody is a pro coder, then they are amazing. Yeah, I know, man. I know. डिग्री एक्सटेंड होगी, वोंट बी एबल टू सिट इन प्लेसमेंट्स नेक्स्ट ईयर. कोई बात नहीं पंकज, कोई बात नहीं. मतलब मैं एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी. देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने एक पहले भी बताई हुई है. सीतापुर. सीतापुर में मेरा एक फ्रेंड था. सीतापुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग समथिंग लाइक दैट. न्यू हिम फ्रॉम माई चाइल्डहुड. ठीक है. सीतापुर में पढ़ता था. वेरी नोन नेम कॉलेज, टियर 3 कॉलेज होगा. डिड नथिंग except built his coding profile. Literally did nothing but built his coding profile and that's it. um and yeah, happy new year Daksh bhai, sorry for late, no problem Joss Butler. So yeah, he just built his coding profile and all he did was make sure कि मैं अगर अपने CV की जगह अपने, क्योंकि उसको पता था वो डिग्री में गोल्ड मेडल भी ले आएगा, nobody is going to take his college seriously, so all he did was just built his coding profile and that's all he did, and he got selected for Google. That's it. And so if you do it, then it's fine. All right. Daksh Maheshwari, bhai, मैं तो हूँ. I like talking to people like this. I like listening to them, understanding, and just if nothing else, just give them hope. Give them hope and happiness that things are not lost. Because sometimes na hum in cheez, especially with boys, we can't talk about these things to a lot of people except our parents. And you know हमारी relationship parents के साथ when it comes to पढ़ाई कैसी होती है. And so I feel sometimes if you can talk to your friends or somebody about the fact that things are tough, but they're not over, man. I think that's very important in life. All right. एग्जाम से पहले करूंगा तो क्या पता बात ही ना कर. भाई लकी वो लड़की है. शी इज अ गर्ल, नॉट वो जॉब ऑफर नहीं है. यू विल बी फाइन, यू विल बी फाइन. व्हाट्स योर मेजर लर्निंग फ्रॉम 2023? गुड क्वेश्चन. एंड में करते हैं इसको परम. हाय दक्ष, हाउ डू यू रिमेन काम ड्यूरिंग टाइम्स? डज मेडिटेशन हेल्प इन इट? मेडिटेशन एक जादू की छड़ी नहीं है कि आप करने लग जाओगे एंड सडनली आप एक संत बन जाओगे. it's it's just the ability to not be fidgety and reckless in your thoughts, in the sense, मैं अगर किसी को बोलूं कि आप 2 मिनट बस शांत बैठो विदाउट एनी थिंक, मतलब विदाउट एनी reckless thoughts, मतलब आप अगर 2 मिनट शांत भी बैठोगे, you will think about something today morning, yesterday night,
or some incident you'll overplay in your head. वो नहीं करना है. Uh, so remaining calm, yes, meditation helps with a lot, but you should also go in with this idea what meditation really is. You might just get a hang of it slowly. It's not simple as आप बैठो, आप शांत हो जाओगे, सडनली अब बुद्धा की तरह निर्वाणा आप अचीव कर लोगे एंड एवरीथिंग. नो, नो, नो. बी रियलिस्टिक. बट yes, it helps. To be to be honest, good year. Left Insta for good. I have been hardly on my Insta for so long. Cleared my CA foundation, amazing. Dropped regular college, got my driving license. Okay, okay. Yusuf, that's a great year. How do you motivate when you don't? How do you motivate when you don't get views when you start YouTube? Starting my YouTube, and yeah, you need to understand the reality that when you start, you have to either have something very unique or you have to be super consistent. Either people should keep seeing you. देख YouTube पे ना, if you check this, इंटरनेट पे चेक कर लो कितने घंटे कंटेंट अपलोड होता है हर दिन YouTube पे. It's a lot. So be realistic that there's a very little probability पहले लोग आपको वो नहीं पहचान पाएंगे. बट आप रेगुलर रहेंगे, आप कुछ यूनिक कंट्रीब्यूट करेंगे, आपके व्यूज धीरे धीरे बढ़ेंगे. राइट. मोस्ट चैनल्स इन देयर फर्स्ट ईयर्स गेट प्रॉब्ली 1K 3K. बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, अनलेस आप मतलब प्रोडिजी हो इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट. मेरी तो बड़ी यूनिकॉर्न वाली ग्रोथ हुई है, मैं तो मजाक भी नहीं कर रहा. एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अदर पीपल इन दिस कम्युनिटी दैट they decided to give me a chance, and I'm just happy that I took that chance. But बस कंसिस्टेंट रहो, यूनिक बनने की कोशिश करो, बी रियल, बी ऑथेंटिक, एंड आई थिंक उससे आपका भला ही होगा. Don't see the numbers for the first year is all I'll say. Just keep making the content of your heart for 1 year and just keep doing it. Because wall आप कभी ना कभी hit करोगे. चाहे आप 200 पे करो, 1000 पे करो, 10,000 पे करो, 20,000 पे करो. There are some people who won't go beyond something, and that's okay. But just realize your motivations. If I do not grow beyond 30K, I'll realize that मेरी capacity ही 30K तक ही है. And that's fine. That's okay. Make my parents proud. How will you make your parents proud? I want to crack the NDA. That's a great goal, Bhavesh. I watched Rock Baba 1 MC Marconi, but you are very calm guy. अच्छा, thank you so much. साका को बोल, अरे झाड़, साका राशोड भाड़ में जाए. 10 sarcastic Ryan, don't do 10 hours of study. Do 2 hours of good study every day and you'll be fine. Good study मतलब फोन वोन कंप्यूटर सब भाड़ में जाए. Best wish and success. Thank you so much, yeah. Get a good internship and get a good job. All right, Fado. You are the only content I have subscribed apart from. Arey, thank you so much, man. Thank you so much, Nox. My resolution is to be the mod of A for Arsenal. आज तो नहीं होने वाला. Done. Thank you so much, Vakar. Ignored my नहीं करा. My resolution is to be the mod. हो गया. Is that guy in Noida? No, he's not in Noida. He's in Palo Alto now, in the US. Having difficulty in deciding topic of PhD proposal, I can't help you with that. That has to be yours and yours alone, unfortunately. I will crack merchant navy exam, build some muscle and manifesting. She finally says yes. Everything else, if you do well in life, she will automatically say yes. A resolution for 2024 is getting jacked. Resolution नहीं पता, इतना अनसर्टन. मे बी आई कैन वर्क फॉर सुपर बिग क्लाइंट्स, मे बी नो ग्रोथ, मे बी बैशिंग फ्रॉम एवरी. भाई हो जाएगा, तू इतना बढ़िया काम करते हो जाएगा. अब तो तू ग्रो भी कर रहा है. यू आर हायरिंग इंटर्न्स एंड स्टफ एज वेल. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. आई एम सो हैप्पी that you're not only taking this as a hobby, but you're slowly, what you're doing, Kush, and many people might not agree, but what you're doing is slowly building a business. Don't worry, you'll get it. You'll get it. Your voice is relaxing. I'm loving it. Thanks, Devanjan. Improve health. All right. How do you improve health? Improve emotional strength. Again, how? भाई स्पेसिफिक होना पड़ेगा. ये सब नहीं चलेंगे. इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एवरीथिंग. सेट टैंजिबल गोल्स ताकि आपको एंड पॉइंट तो पता लगे. I was too critical of Arsenal. I think sometimes you need to be critical of your team. You know me, Araman. I have been very balanced in my previews and everything, but yesterday was disappointing. And kahin na kahin, you have to criticize and call these out. Otherwise, you are selling people a fake thing. Ki like, chalo theek hai, chalo theek hai. I am not disappointed. I mean, I'm not broken. But you also have to be a little realistic somewhere. But theek, I appreciate your opinion. Thank you so much. Stay as fit as I am now. All right. तो रिग्रेस नहीं कर रहे हैं. लेट्स जस्ट से दैट. इंप्रूव एकेडमिकली. हाउ? रीड 5 बुक्स. दैट्स अ वेरी गुड डेफिनेट गोल. बेस्ट विशेज एंड सक्सेस टू बोथ ऑफ यू एंड आर्सेनल टीम. थैंक यू सो मच. नहीं है 45 सेकंड डिले. तू पता नहीं फिर क्या सीन है.
ओनली करना, अच्छा थैंक यू सो मच, ये भी हो गया। ही इज इन नोएडा बट ही सेज इन, ओ कौन नोएडा में? आई थिंक वो मेरे दोस्त की बात कर रहा था। अ फ्यू ऑफ माई रेजोल्यूशन, हाउ टू प्रेजेंट बेटर, गुड, राइट बेटर, ऑल राइट, स्टिल इसको थोड़ा स्पेसिफिक कर सकते हो। इंप्रूव माई वर्क कैप, दैट्स अ गुड गोल, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, reduce screen time is a good goal. I had a story in my mind and I finished it in my mind, also written 25 chapters of like 10 pages. It's like very long. I think it'll develop further and try to make it a reality. Nilemendra, trust me, even if you publish it as an ebook, trust me, even just if you can't, once you finish it, publish it as an ebook on Amazon for free. Trust me, कर देना, मुझे लिंक भेज देना, I will ask people to download it, don't worry. Go to the gym, all right, do physical activity, all right, play games, enjoy my job, get more pro in coding, बढ़िया. Searching for love, okay, perfect. नहीं, I told you he's in Palo Alto. My resolution is to learn editing and filming and start my first short film. Amazing, Lucky, बढ़िया, much success to you. My motivation for coding has gone down, so now I just prompt AI to code and then make it work for me by changing logic and variables. Special one, fair enough. If you think that's how it works for you, that's okay. I'll never criticize using additional technology to help yourselves. If it makes your work easier, fair enough. How did I get into UCD? Long story. Want to help a lot of people become independent, get into great PhD for psychology. Go meet this girl who was there in my most toughest times. Amazing. um गॉड साउंड्स ओके, सीए क्लियर करना है 14 घंटे, डैम, 14 घंटे तो मेरे भाई इफ यू डू 14 आवर्स ऑफ स्टडी, यू शुड बी द एक्सपर्ट एट दैट, देन होपफुली आप वही एम कर रहे हो देन. Want to learn about investment trading, like reading books, etc. All right, fair enough. You all were my break between class 12 and JEE means Ganpati prep. Happy New Year, bhai. Happy New Year to you, Somek, yaar. Personally, a great year for me. Amazing. Completed 5 years of relationship. Damn, congratulations, bro. I also completed 5 years. Super. Yeah. Cracked nursing entrance exam. Damn. Started new course. Leaving old college after 1.5 years was bit hard, but loving it. Amazing. Do I do it every day? No, not really. I do it, I think, once every couple of days, once every 3 days. It's like, for me, it's not just meditation. Sometimes if I just write it out ना, जो मेरे को feeling आती है, उससे भी I feel better. Meditation again is not just बैठ के गायत्री मंत्र पढ़ना है या फिर नाम जपने या फिर कोई pray करना है. It could be anything. Sometimes you can just meditate by just looking out of the window and focusing on one thing, and that's it. That's meditation. Just controlling and calming your mind and just focusing on one thing. What opinion changed in 2023 that you believed in 2022? That people are inherently nice, uh, and that kindness is repaid. I think ये मैंने दो चीजें सीखी हैं. That kindness repay होने वाला जो logic है, I do not agree with it at all. um, and I would say that people are inherently nice. Are I used to always think that in general ना लोगों के अंदर हमेशा अच्छाई होती है. बट कहीं न कहीं उनके रास्ते ऐसे हो जाते हैं, लाइफ में एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो अच्छाई बस ओवरशैडो हो जाती है. एंड आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू एनीमोर. आई थिंक सम पीपल आर जस्ट इनहेरेंटली बैड. लव योर चैनल एज अ चेल्सी फैन. अरे मुरसाल भाई कैसे हो? हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल भाई. ओके, आई एम गोना कैच अप विद सम चैट यार. um, ho- is a relationship when you feel the other person isn't trying enough. Bhai, I am not a counselor in that stuff. I will say just keep communication open. I wish I could help you in your relationships, but I don't know your relationships. I don't know आप लोग कैसे हैं and आपका dynamics क्या है. Every relationship is different, man. If you have PS5, please tell me after 2-3 years what is the performance and do it need to be renewed. I will say you wait for the Pro, yaar. I love MSG. Just wait for the Pro. You can still get a PS5. It will still work okay, but just get the Pro. It's a lot more future proof, I think, and you don't have to wait too far. You don't have to wait too far. Just wait for the PS5 Pro. Um, Jay, in 20 days, any suggestions? Yeah. Stop YouTube for 20 days. Stop socials for 20 days. It's just a 20 days last में nitrous boost है यार. This is the line आपके सामने है. Don't let pleasure guide you for the next 20 days because ये 20 days में अगर आप भटक गए, if you get lost somewhere, then the redo is 1 year पूरा. So if you want to get it done this year ना, it's 20 days बस पूरा ध्यान लगा दो. 1000 ही क्यों नहीं कमाऊं बट कुछ आइडिया यार, ये तो मैं नहीं बता सकता लकी. देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रीलांस जॉब्स बट आई रियली कांट हेल्प यू विद दिस. आर्सेनल फिर से बॉटलिंग शुरू कर दिया यार. एक एक ऑनेस्टली बात बताऊं,
जो लोग पेप टकले एफसी एंड एवरीथिंग, आई नो आपको टाइटल याद तो आपने देखा नहीं होगा, बट मैं इट माइट शॉक अ लॉट ऑफ यू, बट ना एज मच एज आई लव आर्सेनल, मेरी पर्सनालिटी आर्सेनल पे नहीं डिपेंड करती. ऑफ कोर्स देयर आर पोस्टर्स हियर एंड देयर, बट देयर इज अ पोस्टर ऑफ साइबरपंक आल्सो देयर. My entire life does not revolve around football. It revolves around content creation, and for that I have to watch some football. But beyond the point, I don't care. My opinion on anything, right? जैसे एक दिन मैंने कुछ बोल दिया था about something about food, some food. And somebody is like Arsenal fan हो गए तभी इससे बोल रहा है. And I was like, ये मतलब मेरे को तो एक बात समझ नहीं आती कि आप लाइफ में हर चीज फुटबॉल के लेंस से कैसे देख ले, तो मुझे तो नहीं पता. लाइक अगर आप अगर आपका पेट खराब होता है तो आप बोलते हो, और या मतलब ओके, अगर आपका पेट खराब होता है तो बोलते हो कि यूनाइटेड फैन तभी तेरा पेट खराब है, अगर सिटी फैन होता तो परफेक्ट मोशन आता तेरे को. मतलब ये क्या लंडबाजी होती है, मेरे को तो समझ ही नहीं आता है. जस्ट गेट आउट दिस फुटबॉल मैन. न्यू ईयर बट सेम इग्नोरेंस फ्रॉम यू. सॉरी यार गौरव भाई. माय न्यू रेजोल्यूशन इज टू विन अ मेंबरशिप इन दिस चैनल. स्टिल बोल्स मिल जाएगी. uh, मेरे तो टैंजिबल गोल्स है कि क्या है. इफ यूर एंजॉइंग द चिल स्ट्रीम, यस. अरे मैंने तो बोला ही नहीं है. प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब इफ यू न्यू. 215 पीपल हैव डिसाइडेड टू स्पेंड द न्यू ईयर्स डे विद मी. आई एम सो हैप्पी मैन. आई डोंट मिस होम यू गाइस आर अराउंड. इसको 200 लाइक्स कर देते, 189 लाइक्स को. तो जस्ट या हाँ भाई, मतलब मेरे को बड़ा अजीब लगता है यार. मैंने बोल दिया कि यार आई डोंट लाइक, बहुत पहले की बात है. आई वाज लाइक यार मेरे को ना पाव भाजी पसंद नहीं है. पाव भाजी इज फॉलन ऑफ फॉर मी. पीपल लाइक आर्सेनल फैन होना, एंड आई वाज लाइक इसमें पाव भाजी की क्या बात में आर्सेनल फैन आ गया है. समथिंग लाइक दैट इज वेरी वियर्ड. एनीवेज, लास्ट स्ट्रीम बिफोर गोइंग टू इंडिया. नहीं नहीं नहीं, वी विल बी बैक. वी आर फ्लाइंग ऑन द 6th. In fact, when I'm in India, I will not be streaming at all. So I want to get in as many streams as possible. So maybe we'll do a daily stream till the 6th. And then from 6th to 20th, we will have daily shorts uploads for around 20 days or so. And so, yeah, वही है. यहीं पे हूँ मैं. अरे बढ़िया. कैसे हो? Book recommendations for beginners. Don't know where to start. Start with anything. There are no books called books for beginners. Start from anything. Of course, some books are easier to read than others, but think what you really like. Do you like science fiction? Do you like horror? Do you like thrillers? Do you like political dramas? Do you like love stories? There are some amazing love stories also written. ठीक है? There is nothing like सिर्फ लड़कियां ही love stories पढ़ती है. There are so many beautiful love stories written that anyone should read. Everyone should read actually. And I'll say कि start with anything, man. Pick a favorite genre of yours. Pick the most basic book in that. For example, अगर आपको फैंटेसी एंड मिथोलॉजी पसंद है, ठीक है, देन यू पिक अप पर्सी जैक्सन. हाँ, पर्सी जैक्सन पढ़ना शुरू कर दीजिए. बुक के लिए कोई स्टार्टर कॉम्प्लेक्स लेवल नहीं होता. बिगिनर्स के लिए कोई बुक्स नहीं होती, बुक्स और बिगिनर्स करके. Otherwise, just read 1 or 2 pages a day. If you like academic books, take academic books. If you like self-help books, take self-help books. But just read 1 to 2 to 5 pages a day, and that's more than enough. No football talks today. I'll give you time out. One of my life goals is to experience the New Year's fireworks show in London. Are amazing. Next year, bhai. Next year. I'll be starting PhD. Congratulations, bhai. Any suggestions that I should keep in mind? Looking forward to this journey. My suggestion would be that it is going to be very different from what you've done in life till now. In life, हमारी पढ़ाई ऐसे होती है. एक एग्जाम आते हैं. मिस्टर पोपो, थैंक्स फॉर गिफ्टिंग द मेंबरशिप अगेन. जिसको भी मेंबरशिप मिली, मिस्टर पोपो को थैंक यू बोल दीजिए. And so, in this, you are in the middle of an ocean and you have to find your own path. There is no syllabus, there is no subject, there is absolutely nothing. You have to find your own path, and there is a beauty in it and there's a challenge in it. So, don't feel bad. Don't overlearn things. मतलब एक टेम्पटेशन होती है कि मैं और पढ़ लूँ, मैं और पढ़ लूँ, मैं और पढ़ लूँ, मैं और पढ़ लूँ, मैं और पढ़ लूँ. रीड वॉट यू हैव पहले रेड. 2 चीज़ें पढ़ लो, 2 पेपर पढ़ लो. उसके बाद आप समझो कि आपने क्या पढ़ा है. राइट इट आउट, अंडरस्टैंड, री रीड, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद समबडी अबाउट इट. Write a critique about those 2 papers or whatever. And so I will say, if I had my first year back of PhD, I would do this. I read a lot, and sometimes I forgot what I read. And so I'll say, just take it slow, and it'll be fine. It'll be fine. Don't worry.
एल दक्ष कैसे पाव भाजी पसंद है यार, बस मूड उठ गया यार। हाउ विल आई कुक यू व्हेन यू डोंट स्ट्रीम, डैम। आप रियल में भी काम हो या एमएमए फाइटर हो? मैं भाई एमएमए फाइटर तो निकल गया मेरा। आई एम डन विद द एमएमए फाइटिंग। I no matter when I sleep, I wake up early. Started though I slept at 3:45, woke up at 6:30. Heavy efficient in front end. Now I'm starting at the back end. Full pure, full pursue, full stack करे। बढ़िया यार, आप full stack dev बन जाइए hopefully. Gifted one membership. Thank you so much. Claim करने से कुछ नहीं आता यार. Um, Watching summary is good, or we should read the whole book? Definitely always read the whole book. I will say. Read a chapter, but okay. One way to see if a summary is good is if a book has 16 chapters, at least 5 chapters आप पढ़िए और 5 chapters की summary भी पढ़िए, and then आपको difference पता चल जाएगा कि actually कितना है। If you think the summary is spot on, मुझे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं थी, तो पहले आप समरी देखिए एंड देन आप चैप्टर पढ़िए। पहले आप समरी देखिए फिर आप चैप्टर करिए। आई थिंक दैट विल हेल्प यू अ लॉट। इट्स लाइक दिस, ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हार्दिक। इफ आई गिव यू अ रैंडम शो, ठीक है, जो आपने शायद से कभी नहीं देखा हो, ठीक है ना, आई आस्क यू टू जस्ट वॉच इट एंड देन आई क्वेश्चन यू अबाउट इट कि देख भाई, ये बता कि उसमें इस बंदे ने कौन से कलर का सूट पहना था। Then you'll think about it, maybe you'll remember it, maybe you'll not remember it. It becomes a chance thing. But if I tell you before कि यार Hardik, I'm going to show you something that you've never watched before, but I will ask you about the suit of the guy, I will ask you the model of the car, and I will ask you कि ये city है उसका नाम क्या है. And so when you watch that movie, you will keep in mind these three things already. So when you read the summary first, you'll get a general idea about what everything is being talked about, and उसके बाद तुम बुक पढ़ोगे तो ये होगे हाँ ये तो समरी में था एंड एवरीथिंग स्टफ लाइक दैट। मेरा कमेंट ले लो प्लीज। वेयर इज योर कमेंट, वेयर इज योर कमेंट? केशव का तो दिखना ही चाहिए यार, कहाँ गया? डैम केशव, आई कांट फाइंड योर कमेंट ब्रो। भैया अभी जाना पड़ेगा पढ़ने, लव यू। अरे आराम से लकी, पढ़ा मजे से पढ़। मेरा रेजोल्यूशन भी ले लो। इशरत कहाँ है आपका रेजोल्यूशन? सॉरी बॉयज, आपके रेजोल्यूशंस नहीं मिल रहे मेरे को। दक्ष भाई एनी गुड सीरीज टू वॉच? आई हैव नॉट बीन वॉचिंग एनी सीरीज। जियो कैसर कब होगा डिस्कॉर्ड नाइट पे? Probably when I'm in India. We'll do a lot of things on Discord when I'm in India. ठीक है? क्या हो रहा है? ट्रेसी वकार, अच्छा यहाँ पे करवाओ, मेरे को डीसी पे नहीं करना है। पहली डेट पर जाऊंगा। डैम सन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, सो हैप्पी फॉर यू। कितने पैग लगाए रात को? नो पैग्स, नो पैग्स, ओनली 2 ग्लासेस ऑफ बियर। ओके, आई एक और लकी। कोई दिक्कत नहीं दक्ष भाई, डिस्कॉर्ड पे फुल्ली एक्सप्लेन कर दूंगा। भाई कोई डिस्कॉर्ड वाले बंदे को चाहिए, you know, any discord person needs their resolutions read out? I think Tracy said he wants his resolution read out, तो मैं एक बार ना जनरल पे जाके करता हूँ। wait, where is it? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मेरे रेजोल्यूशंस कहाँ गए? नहीं मिल रहे मेरे को अभी। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, विल डू आवर रेजोल्यूशंस। इंडिया मीटअप, आई विश यार। कुछ मिलेंगे, तेरा भी मैसेज पढ़ लिया मैंने, कोशिश करूंगा मैं, बट फर्स्ट आई वांट टू बी विद माय फैमिली, माय फ्रेंड्स अराउंड, एंड देन उसके बाद इफ आई हैव टाइम आई डू अ मीटअप और समथिंग लाइक दैट। भाई मेरा एड्रेस कर दो, जब से लिख रहा हूँ। अरे सॉरी मेरान यार, बहुत सारे लोग हैं। वॉच ट्रू डिटेक्टिव, यस यू कैन वॉच ट्रू डिटेक्टिव। कितने पेग लगाए, मेरान क्या कह रहे हैं? देखो यार सिंपल सी बात है, अनफॉर्चुनेटली ना, अगर आप लोगों को अपना कमेंट पढ़ाना है, देयर इज ओनली वन वे, इट कॉस्ट सम मनी। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट फाइन, अदरवाइज इट्स ऑल अप टू चांस। यहाँ हैमबर्ग में ट्रेडिशन होता है कि न्यू ईयर की रात में 12 पब्स में 12 पॉइंट्स पीनी होती हैं। मैं फोर्थ के बाद लटक गया और बाहर से सीधा घर पे 1 घंटे पहले आंख खुली। कंग्रेट्स भाई, कंग्रेट्स। यस प्रणव, ग्रेट वंस। मेरे को एक बार टैग कर दे शरत डिस्कॉर्ड पे, लिख दे एक बार जनरल पे जाके कि दक्ष भाई ये मेरे रेजोल्यूशन है। One stop playing more FIFA, fair enough. But I can't believe I played so much FIFA and I spent so much money on FIFA. Go to some new fan screening and have fun. Amazing. Have some rival fans as well. Maintain football sleep balance. Football sleep balance. What is football sleep balance, Pranav? Tag कर दिया DC पे. All right. Okay. Tracy's resolutions are
to improve myself to the finest, to get good marks in 12th, yes, to get into nicer, want to watch more than 300 plus games this year. So if you watch a Premier League weekend, you watch max, like, I think 4 games. So you need 75 weekends. Oof, that's a lot, man. 300 plus games. 300 plus games तेको पता है कितनी ज्यादा होती हैं? Even if you watch, मैं कहता हूँ तू अगर 2 क्लब्स ही प्रीमियर लीग में उठा ले तो तू साल के मैक्स टू मैक्स देख लेगा 38 गेम्स, सॉरी 76 गेम्स, प्लस रियाल की देखेगा अनदर 19, 95 गेम्स। 300 तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। मेक मोर फ्रेंड्स। देख, ये अगर 300 प्लस गेम्स देखनी है तुझे, तो तेरे दोस्त तो नहीं बनने वाले। 30,000 मिनट्स ऑफ फुटबॉल अप्रोक्सीमेटली ब्रो। एंड मॉड फॉर ए फॉर आर्सेनल ऑफ कोर्स। तू रोज एक गेम देख ट्रेसी, फिर तो हर दिन एक। हाँ भाई, 300 प्लस गेम्स भाई, दैट्स अ लॉट। उसके बाद बोलता है वांट टू मेक मोर फ्रेंड्स आल्सो, साले। हाइलाइट्स हाइलाइट से देख लेगा वो। हाँ, ये होगी ना थोड़ी चीटिंग। और इशरत, इशरत का भी मिल गया। क्रैक नीट, लर्न टू कुक, अमेजिंग। लर्न वन मोर लैंग्वेज, मे बी फ्रेंच और स्पेनिश, आई एग्री। Start playing football again like pre-COVID time. Okay, solid. Do some side course for significant growth in music industry. Damn. Release 10 stand-up bits. I have written 25 scripts. Come on, Ishrat, you can do this one. And start Ludhiana Reds Man United screening in my city. Ishrat, these are, if you achieve all of them now, I will do my best to buy you a membership. मैं खुद तेरे को membership के पैसे UPI कर दूंगा. If you achieve all of this, if you achieve all of this, I will UPI the money for you to buy a membership for my channel myself. You'll, तो technically तेरी free membership हो जाएगी. मेरे को भी कुकिंग सीखनी है, सिंपल सी होती है यार। अपने मम्मी के साथ एक दिन किचन पे जाओ, बोल दे मुझे कुकिंग सीखनी है, और सीखने का टाइम लगाओ, देखो कि कैसे कब बनाना होता है, कैसे करना होता है, सब बढ़िया हो जाएगा। आई वाज थिंकिंग अबाउट लर्निंग कुकिंग, देन आई रिमेंबर्ड आई ऑलरेडी कुक। Pollution in Delhi has increased a lot. Hopefully, I'll adapt to it. Damn, son. I hope I know I'll be sick. Want to play football again daily and be CA, have a girlfriend. यार एक बात बताओ, what is this obsession with having, yeah, Ludhiana. Uh, so what is this obsession with having a girlfriend? I know everyone wants partners and love and everything, but ये सबके resolution में क्यों आ गया कि मुझे बंदी चाहिए? I genuinely have never heard women, very few women have said as resolutions that I want to find a man. Genuinely, what is this? Tell me about this, boys. What is this love? What is this obsession with need love, need girlfriend, need pyar, need sex? What is this? Lonely है सब। यार lonely की बात थोड़ी है यार। lonely, एक बात बताओ, if you're lonely, why don't you go hang out with boys? I'm not saying fall in love with boys, but why don't you hang out with boys if it's loneliness? And if it's havas, then we're talking about something else. If it's havas, brother, if you're looking for a girlfriend for havas, it's not gonna end well, boys. It's not gonna end well. Body needs होती हैं. Boys, 300 फुटबॉल मैच देखने हैं, बंदी चाहिए, एंड रेजोल्यूशन। 300 फुटबॉल मैचेस और 300 फुटबॉल मैचेस में बंदी। आई थिंक इट्स अबाउट इमोशनल सपोर्ट। आई कैन गो ऑन बोर्ड विद दैट, बट आई थिंक यू नो व्हाट वी रियली लैक एज मैन। आई थिंक वी रियली लैक, नॉट लाइक, आई थिंक वी रियली लैक ट्रू फ्रेंडशिप्स जहाँ पे इमोशनल सपोर्ट मिलता है। हैव यू सीन गर्ल्स बीइंग फ्रेंड्स? आपने लड़कियों को दोस्त बनते हुए देखा है? भाई, you can have the biggest emotional conversations with them and they'll be there. They will be there. Like Pep says, no, I will be there. We will be there. Girls are there for each other. And I think we need friends जहाँ पे emotional support मिले। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब भी हम लौंडे लोग अपने दूसरे लौंडे लोगों के पास जाते कुछ इमोशन लेके, तो वो लोड़े लोड़े सब यही सब में लग जाते सब लोग, गाली गलोच में, एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। स्ट्रीम पे ही, अरे हाँ, अगर कोई नया डिस्कॉर्ड मेंबर ज्वाइन कर रहा है, जिनको भी आज मेंबरशिप मिली है फ्रॉम मिस्टर पोपो और वकार ना, जस्ट कनेक्ट योर यूट्यूब अकाउंट टू द डिस्कॉर्ड व्हेन यू जॉइन द डिस्कॉर्ड। हाँ, इट मेक्स इट इजियर फॉर अस टू मैनेज मेंबरशिप्स। मैंने भी डिस्कॉर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच भाई। गेट अ जॉब निखिल, राइट, ऑफ कोर्स। और आर यू सेइंग इट टू मी, गेट अ जॉब दक्ष भाई? नहीं, नो, इट्स प्रॉब्ली योर, यू नो, it's probably your resolution. I'm happy. It just feels lonely sometimes where you are in your darkest period. How does a girl or love fix this? Tell me. Is it just that you need somebody to talk to?
I think you can do that with friends also, no? I think you can do that with friends. Demand and supply. Female friends are always misunderstood. So having a girlfriend makes you answerable to your friends in many situations. यार सोचो ताकि मैं अपने दोस्तों को जस्टिफाई कर सकूं इसलिए मेरे को बंदी चाहिए. Come on, man. None of these reasons are good enough to say मेरे को बंदी चाहिए. Get a girlfriend as your resolution. Social media and then people post about their partners and shit makes it seem like something amazing and shit. Ah man, trust me. You've seen so many people saying I had a shit year because वो छोड़ के चली गई. Come on, man. Be a nice friend with the lady. That's it till your end of relationship. All right. Like prioritize sleep over football. Oh, that's your football sleep. But not stop watching football and think about it before watching 1:30 a.m., 2 a.m. matches and then sacrificing sleep later. Wo wala thinking. Can you do that, Pranav? Will you do it? I'll be very surprised if somebody can do it. लौंडे होते हैं भाई साथ हमेशा बस वही कह रहा था रोहित थैंक्स फॉर द कंट्रीब्यूशन यार रो 7 यूनाइटेड थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन हैप्पी न्यू ईयर टू यू भैया द थिंग इज पीपल फील अ सेंस ऑफ नीड टू समवन अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल दिस थिंग जेन लव हैव अ लॉट ऑफ फेक पीपल सो दैट पीपल कैन बी वन थिंग ऑलराइट जिसकी खुद होती है ना वो ऐसी बातें नहीं करते हैं I know. I will honestly say increase honest female friends and open up emotionally rather than being mard. It will help in relationship. बंदी नहीं मिल जाएगी in the process. हाँ यार, I agree. I agree. I think there is this very unhealthy obsession with प्यार चाहिए अपन को. Uh, इतना ऑब्सेशन इज नॉट हेल्दी लेकिन भाई लड़के प्यार भी तो करते हैं एक दूसरे से भले ही इज्जत में कि हाँ वही है ना दैट्स द थिंग कैन यू रियली गो विद योर फ्रेंड्स फॉर एन इमोशनल टॉक आई थिंक यू शुड हैव फ्रेंड्स लाइक दैट आई थिंक व्हेन वी I think when we boys, it's time to go to sleep and want to share something, or generally for any talks, there is not enough people for me. Though, so having someone by your side really helps us. All right. No, I think relationships and companionships are very natural things to strive for in life. हमारी genetics में coded है. Uh, but you should also know why you're going for somebody else, right? I think a lot of us lack true friendships, and I think that's a big problem. So this is why I say if you have this resolution ki bandi chahiye, keep that resolution. It's always nice to look for a nice companion. But I also say have a lot of true friendships, and if you have already a lot of friends, start having deep connection with your friends. नॉट कि दिवाली पे चले गए पटाखे फोड़ने एक साथ या फुटबॉल हम लोग 1 घंटा डेली खेलते हैं meet with people outside of your regular meetings and talk to them about things that you would want to talk to about your with your partner as well, right? And if you don't have enough people, then try to make those people. Want to see United come back and crack NHS and Ames Medical in the same year. Damn, son. I am the most optimistic about the NHS and the Ames, not about Man United. But thanks for the contribution again, Row 7. I need a girl as a good friend. हाँ तो मेरी रेजोल्यूशन है भी नहीं फीमेल फ्रेंड्स आर इनफ हाँ फेयर इनफ आई एम द ओनली गाय इन माय बायो क्लास उफ उफ बी सलमान भाई भैया द थिंग इज पीपल फील अ सेंस ऑफ नीड टू समवन अंडर हाँ ये तो हो गया गेट अ जॉब मेंटेन हेल्थ spend more time with family or bhai Tom Hardy said that you don't have to be friend toxic people as you cannot drink poison if you feel thirsty fair enough bhai fair enough हो गया I will honestly say ये हो गया during the toughest phase what we need is supportive friends and luckily we have a few yes अरे मोहक ने न्यू ईयर्स पे भी 5 मेंबरशिप गिफ्ट कर दी भाई कैसा है मोहक कैसा है हम ये बात कर रहे थे यार ये मोहक आज मोहक का मेरे को एक्सपर्ट ओपिनियन सोचना है मैंने मोहक सबसे रेजोल्यूशंस पूछे हुडी मत भूलियो बिल्कुल बिल्कुल मैंने लोगों से पूछा कि अपने 2024 रेजोल्यूशन क्या है एंड 80% ऑफ द पीपल वर लाइक गर्लफ्रेंड चाहिए सो व्हाट व्हाई डू यू थिंक ये एक रेजोल्यूशन है वो हक है भाई वो हक भाई यस चैट डिस्कॉर्ड सम इंसिडेंट हैपेंड विद मी क्या हुआ अभिजीत कहाँ पे इंसिडेंट हो गया It's so random. I was watching your stream under a metro pillar for some reason. I put my hood on, and after 12 seconds, bird pooped on me. Oh damn. Okay.
Also, I'd like to mention a lot of people complain कि emotional support नहीं है, but the root of it is कि maybe you are also not emotionally available. यार, I think Vakar, most of these guys are 17, 18s anyways. तो मुश्किल होता है. लटीना चाहिए. Yes, of course. Of course. भाई, to be honest, I think who is now everyone's crush now? I think if we have to say if everyone's latest crush, I think it has to be Tripti Dimri, right? Everyone loves Tripti Dimri. And she is very beautiful woman, huh, by the way. But yeah, everyone loves Tripti Dimri. Is she the national crush now? She's 29 years old, huh? Whoa. She's slightly older than me. Crazy. City is my crush. अरे निकलो भाई. Vamika. I think though Tripti is now the national crush भाई. I don't have friends with me. I have not received any New Year wishes. So हाँ. अरे सब लोग यहाँ पे 171 people are here. I need at least 100 wishes for Edits Jank. Okay. Uh, Please wish Edits bhai a happy new year. Things are nice when you feel a real connection. Be great with friends first, so that later. Yes, exactly. Be friends first, bhai. Tripti Dimri, Vamika Gabi. City is my crush. No, Tripti Dimri. No. Daksh bhai, give suggestions to manage board and entrance both. Yeah, I wish I could give you one, but it's honestly, padhai is now very different in school than what it was during my time. All I'll say is कि यार distraction छोड़ो, बहुत time है दोनों पढ़ने के लिए, ठीक है? No way, it's that Tripti girl. Still Bull says she was my crush in 2019. You were ahead of the curve. ये देखो, ये लड़का स्कूल में है और ये कहता है वन नाइट वंडर. ये लड़का देखो भाई, मतलब क्या हो गया भाई? तुम्हें बड़ा क्रश जानना है भाई? मैं तो ऑफ कोर्स. यू डोंट नो तृप्ति दिमरी? डैम. दिशा पटानी. Ana de Armas. By Ana de Armas is forever crush. Ana de Armas and Dua Lipa. Mine is Olivia Rodrigo. Vamika Gabi, so beautiful. An Italian Latina called Tin Pak. Okay. And it is the best moment you can have is chilling with the boys. And this is so true when I meet my friends. You only talk about school memories. Yeah, man. भाई 18 21 साल के लोग कह रहे हैं आंटी. Many people didn't know her before Animal movie. Yeah. Beautiful and smooth bhai. Smooth. Okay, damn son. Mohak और वामिका गाबी पसंद. I haven't seen Vamika. Wait. Okay, I see the vision. I see the vision. I see the vision. Fair enough. Fair enough. Daksh bhai is also hot. भाई बख्श दो मुझे यार. बदन धोखा दे रहा है अभी से. मानस भी क्या हरामी इंसान है यार. मोहक 2023 के कौन से डिल्यूशंस रह गए एंड 24 के कौन से रेजोल्यूशन है? दिशा पतानी इज मिड. हो, शी इज फ्रॉम दिल्ली टू. डैम. Sonam Bajwa. I like cute girls more. Sydney Sweeney. Bhai, Sydney Sweeney. Come on, man. Still crushing over my girlfriend. Best. They are just riding the wave. I had to crush on them. वकार इसमें भी दिखाना चाह रहे मेरी फर्स्ट मूवर एडवांटेज थी. स्मूथ ऑपरेटर हो गया दक्ष का. हाँ. जेनिफर लॉरेंस. डैम. दैट वाज अ वायलेशन. पोहक. डैम सन. पोहक ने क्या बोला? और मोहक अकाउंट हैक कर लिया है वकार और अयान ने. मोहक क्या रेजोल्यूशन है तेरे 24 के? आई लाइक मानस फ्रॉम एम भाई. आई लाइक निधि ऑल्सो. दोनों को ही प्यार दो. व्हाट्स रॉन्ग विद स्वीट? नथिंग इज रॉन्ग है. शी इज अमेजिंग. सारा सफारी says Arman. It is the first time I've heard that name mentioned outside of her fitness channels. सिड भी कह रहे हैं तृप्ति डिमरी है. ऑफ कोर्स. moved out of from 8 years of one side of love. Proud of you, my bro. What is your new year resolution? मैंने तो यार अब बता दिया मैंने. I will do 4 days a week. I will go for a walk twice, 20 minutes a day. I will do physical activity. I will crack my transfer panel जिससे मैं एक independent researcher बन जाऊंगा in their first attempt.
आई थिंक अभी होने वाला है, इस साल के मार्च में हो जाएगा, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट होपफुली. And I will double everything in my channel: views, subscribers, watch time, and revenue. Was the last Bollywood movie I saw was Animal, yeah, unfortunately. Bhai, I can't have a crush on this woman, man. I seen her as a bloody kid. I will crack, bhai, crack. My only resolution is to quit. अरे यार, ये तो अब देखो, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते. दक्ष भाई, which game was your favorite this year that I played? I played Ghost of Tsushima this year. I think that was an amazing one. Uh, Cyberpunk. Back again, Cyberpunk. Was a great game. Was a great game. Daksh bhai need more content this year. Yeah, we'll try my best, man. We'll try my best because, like I said, I can't really fuddle on my PhD also, right? अगर मैंने YouTube कर लिया बट मैंने अपने PhD को नकार दिया तो अच्छी बात नहीं होगी. So yeah, शिवम का कमेंट लो. शिवम ने ऐसा क्या कमेंट कर दिया? शिवम, माय क्रश इज बस लड़की होनी चाहिए. अरे बाप रे. Shivam, go out, my friend. Go out, meet people. Mohak wants to be slim. भाई करना पड़ेगा यार. एंड आई एम टेलिंग यू मैन, वकार, तेरे पे मैं स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ यार. आई एम क्रशिंग ऑन एंड्रिया बेजर राइट नाउ. Was searching for new artists, Spotify Wrapped, and she is there. Bhai, good musicians are always hot. Now, Vakar, special responsibility on you. Bhai, तेरे को you always have to keep प्रेशराइजिंग मोहक. जब भी व्हेन यू सी हिम ईटिंग जंक फूड, जब रात के वॉच अलोंग में वो जब ऐसे नमकीन डफ रहा है ना, उसको बोलना है भाई मोहक, तेरी शादी होने वाली है और तू सोच अपनी फोटोज में कैसे लगेगा ये सारे नमकीन खाते हुए. तो जस्ट जस्ट ऑलवेज मैन, ऑलवेज जस्ट कीप एवरीवन मैन, एवरीवन. जब तुम मोहक के चैनल पे जाओगे ना, मोहक को शादी करनी है, बस बस वही. उसकी शादी के लिए ही हैज टू लुक लाइक द मोस्ट डैशिंग गाय एवर मैन. ही लुक सो गुड इन अ ब्लडी सूट. तो उन लोग उसको प्रेशर कर करके तंग कर दो कि मोहक नमकीन मत खा, मोहक फल फूल खा ले, कुछ खा ले. हाँ, अब नहीं चलेगा ये सब. यू गाइज हैव टू, यू गाइज, दिस इज द फर्स्ट एंड द ओनली टाइम आई एम एंडोर्सिंग यू गाइज कि अगर मोहक ऐसे कुछ कर रहा है ना, बुली हिम. ठीक है, उसको तंग करो, उसको डांटो, उसको इफ यू हैव टू शेम हिम ऑल्सो. बट बंदे शादी में इतना हॉट लगना चाहिए ना कि मतलब सब बोले कि भाई ये हमारी कम्युनिटी का लौंडा है. ऑलराइट. भाई इतने हरामी लोग हैं चैट में, ठीक है. सो मोहक की अब आती है वॉचिंग अराउंड 800 900 1000 लोगों की, ठीक है. मोहक भाई नहीं समझेंगे, तुम तंग करोगे सब समझेंगे भाई. एंड सो आई से दिस, मैं मोहक का एक देख रहा था वीडियो, लाइव ही था, जिसमें मोहक ने बताया था कि शादी हो रही है एंड एवरीथिंग. नॉट दिस मानस वन, बहुत पहले भी बोला था उसने, ठीक है. Wait, now you don't have to let this happen. And so I think it was the first time somebody was like, मोहक ने बोला था कि I think 2024 में शादी हो जाएगी and everything. इतनी हरामी चैट थी, ठीक है. चैट बोलती है कि मोहक सुहागरात वॉच अलोंग हियर वी गो. मैंने बोला रे यार, इन लोगों के साथ कुछ भी शेयर कर दो ना, इतने हरामी लोग हैं, चढ़ जाते हैं सीधा. मोहक भाई 6 पैक चाहिए भाई. bully him into getting a 6 पैक man. दैट स्टफ. ए दिबांजन, तू पढ़ ले भाई पहले, ये सब पोजीशन क्या बकवास करता है. मोहक इज टू हॉट इफ ओनली आई वाज अ गर्ल. दक्ष भाई की शादी का भी बहुत टाइम है, मेरी शादी में, डोंट वरी. हाँ, किसी ने बोला सॉरी, हाँ, हनीमून वॉच अलोंग. भाई कितने हरामी लोग से हैं यार, शर्म नहीं आती. आई जस्ट सेड इट आल्सो. तूने भी अभी ये देखो. कैसे लोग हैं यार तुम लोग. चलो जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ. What is the craze for BTS among girls? Don't get it. Yeah, it's people will like other boys who are clean, who look handsome, who look groomed, and who can dance. This will always be the national crush. Okay, this will be always be the national crush. It's why Justin Bieber was a huge crush when he was young. It's why Twilight में Edward Pattinson was a huge crush when during my school years. It's the same thing with BTS. हम थोड़ा कुछ बोलते हैं, इसको खड़े होके डीप ब्रीथ इनहेल करके दिखाना है, शुरू कर देता है कि इज नॉट फैट. क्लियरली सी अदरक फिगर ना ब्रो, यू हैव टू नाउ डू इट. ठीक है. इफ ही सेज कि देखो मैं कितना पतला हो गया एंड एवरीथिंग, नो, नाउ ही हैज टू शो मसल्स. यू कांट फेक मसल्स, सो ही हैज टू शो मसल्स.
He has to show that I've lost weight on my face, on my arms, on my legs, everywhere he has to lose it. अगर शादी की बात हो रही है भाई, वी ऑल हैव टू बुली मोहक टू फॉर दिस, ओके? बॉइल्ड एग खा रहा हूँ, बोरिंग लाइफ, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। जितना प्रोटीन आपकी बॉडी को मिल रहा है ना, खुश हो रही है वो। कैन आई मैसेज यू ऑन ट्विटर, says edits jank. You can, there's a very little possibility that I'll see it. Sometimes I just forget, man, but try कर लो, कर लो। Speak something in Irish accent. Unfortunately, I don't have an Irish accent. uh, भाई क्या वेट लॉस टिप्स है? कम खाओ, एक्सरसाइज ज़्यादा करो, थोड़ा घूमो, टेबल से चेयर से उठा करो। बस यही है यार लाइफ में। आपके पूर्वज वगैरह सब जाते थे काम वाम पे पैदल शैदल, वो पतले रहते थे। हम टेबल पे बैठ के या बेड पे बैठ के ऐसे फोन को ऐसे ही देखते रहते हैं। दैट्स इट, दैट्स लाइफ। Getting away from corn addiction and nofab would be one of my goals. Getting fit as well. Yeah, man, I understand. Bye, Rad. See you around. Quit sugar. Daksh bhai, personal trainer. मैं तो कुछ भी नहीं भाई. You should gain weight. I should gain weight. Crazy. No way. No way. No mohawk was harmed. Can someone gift me one membership? ऋषभ कह रहे हैं. दारू छोड़ दो. मैंने तो छोड़ दी. Daru said, trust me, so many benefits happen. You sleep much better. I drank yesterday and I had the worst sleep as of all time. उधर उसके अलावा skin has cleared up a lot. Hair quality has gone up a lot. Very little hair fall is also happening, thankfully. And so yeah, बस यही है यार लाइफ में तो सिंपल सिंपल just take out the poisons from your life, man. Ooh, you know what? I will see how much I ate from Deliveroo. जैसे इधर का स्विगी है, I will see how much I ate from Deliveroo and I will cut that in half this year. डिस्कॉर्ड लिंक यार, चैनल पे जाओ, देयर इज अ मेंबरशिप ओनली टैब एंड उस पे आपको फर्स्ट पोस्ट मिलेगा ऑफ द डिस्कॉर्ड लिंक। हाँ, आई हैव लेफ्ट इट। I had my first drink in 4 months, yeah, still bowls. And it only happened because I was like, you should meet people on New Year's Eve. You shouldn't be alone here. And so, and that's the whole thing. बाकी तो बाकी तो I don't think I'll drink यार. I don't have any other plans to drink either. I might go to the pub, but वो नॉन अल्कोहलिक पी लेता हूँ मैं। चार्जेस कितने आता है? किस चीज़ का चार्जेस प्रतीक? बाय बाय इशरत। हम स्ट्रीम भी इनफैक्ट एंड ही करने वाले हैं 10 मिनट में यार। वेट बढ़ाने का टिप चाहिए शिवम। अगेन नॉट, आई एम नॉट अ ट्रेनर मैन। दक्ष भाई, हैव यू प्लेड ड्रैगन बॉल लेजेंड्स? स्टोरी मोड इज लिट। आई हैवंट प्लेड अ ड्रैगन बॉल गेम सिंस ड्रैगन बॉल जी बुडोको टेंकाइची 3। I never drank, never smoked. Then तो if it's genetic यार, to be honest, again you have to go to a doctor man. वही बताएंगे रोगेन शोगेन जो भी लगाना होता है। But don't worry man, you're what? अभी तू अभी कॉलेज में है साले। 18 साल पे किसी के इतना हेयरफॉल नहीं होता। डोंट वरी। एब्स दिखाओ। एब्स तो नहीं है मेरे पास, इतना भी नहीं है मेरे पास कैपेबिलिटी। तन्हाई मिटाना बहाना दारू पीना। अरे नहीं, कोई इफ दारू और सुट्टा इज योर बहाना फॉर तन्हाई, then my friend, you have bigger problems. हाँ, you can contact ऋषि एक्चुअली। ऋषि का एक्चुअली रिवर्स हो गया था। आपने बाइसेप्स देखा हो? यार अभी मेरे को ये पूरा खींचना पड़ेगा। ओके, लेट मी सी इफ आई कैन शो। नहीं दिखेगा यार इसमें से तो नहीं दिखने वाला। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। 16 में हेयर फॉल हो रहा था। आई डोंट नो मैन। तेल लगाओ। मैं तो हर दिन तेल लगाता हूँ, नॉट हर दिन बट लाइक एवरी कपल ऑफ डेज आई ऑयल माई हेयर। और यहाँ का ऑयल नहीं भाई, प्रॉपर यहाँ पे इंदुलेखा टाइप्स लगाता हूँ मैं यहाँ पे। कौन सा ये ब्रिंगा ऑयल। भाई तेल वेल लगाया करो हर दिन, क्या ऑलमोस्ट हर दिन। विल ग्रोइंग हेयर लीड टू हेयर फॉल? आई डोंट नो मैन, अगेन नॉट अ डॉक्टर। दक्ष भाई थे नहीं। हाँ सही बात है, थे नहीं मेरे कभी भी। कार्डियो कितनी टाइम का लिया करते हो? यार इट्स नॉट दैट आई डू कार्डियो स्पेसिफिकली लाइक दैट। सो आई वुड यूजुअली गो फॉर अ वॉक एंड व्हाट आई डू इज एट द एंड ऑफ माय वर्कआउट ना, आई डू स्प्रिंट्स के 5 सेट्स एंड स्प्रिंट्स लाइक ऑल आउट स्प्रिंट्स। मतलब उसके बाद धड़कन तेज होती है, सांस खत्म हो जाती है, दैट लेवल ऑफ स्प्रिंट। सो आई डू 20 नहीं 20 to 30 seconds 5 sets. So first 2 sets I do for 30 seconds, उसके बाद 20 seconds with like a minute and a half का break बीच में। That's all the cardio I do. I can't do like long term or long distance running. My knees hurt a lot. So what I do is I just do sprints. So it's more intense, shorter, but I feel it's really good. Uh,
Sprints are the best exercise. Yeah, same for me. Same for me. Bro is doing HIIT. Yeah. You should lift more weights and do a bit more cardio, says Puneet. Yeah, fair enough, man. For me right now, there are just a bunch of things I have to prioritize right now. So what I do for physical activity is sprints, is weights, is walks, and then I do bouldering or wall climbing. So I do like these 4 5 things in different splits. So some days I'll do 2 days of weights or 3 days of weights. A day of sprints तो खैर हर दिन वर्कआउट वाले दिन हो ही जाता है. And some days I'll just include bouldering thoda zyada. And so what my idea with bouldering was कि not only is it like a fun way to get healthier, but also it helps me build, मतलब जो कहते हैं लोग बॉडी एक्सरसाइजेस करो एंड एवरीथिंग, राइट, इट्स अ फॉर्म ऑफ बॉडी एक्सरसाइज. यू आर पुलिंग योर बॉडी वेट, यू आर पुशिंग, यू आर इंक्रीजिंग योर फ्लेक्सिबिलिटी. अब अपने टांगे, यू स्ट्रेंथन योर हैमस्ट्रिंग्स एंड योर ग्लूट्स एंड योर थाइज एंड योर बाइसेप्स एंड योर पुलिंग पावर गोज, आपके आर्म्स ज़्यादा वाइड हो जाते हैं. सो इट्स, आई रियली लाइक इट. या या again, I am not a fitness trainer. I do what works for me, and for now I'm in a very nice place where I feel agile, and that's more than enough for me. uh I think not this year, but I will resolve it next year, 2025 mein I will be in the most, um I would strive to be in the best physical shape of my life. That's it. How to manage protein intake as a vegetarian? Yeah, you get these vegan ones also, I think, protein shakes. Otherwise, again, you it's better you consult a nutritionist than me, to be honest. Agile is good to have. Yeah, I want agility, man. I want agility and flexibility. Strength भी, it feels good. आज मैं भी स्ट्रीम के बाद पढ़ाई करूंगा and then I'm gonna go to the gym. And that's it. Agility and explosiveness is better than strength. I just like the fact, like, you know, some people get this thing कि एक्सरसाइज एंड वेट्स करने के बाद या कार्डियो करने के बाद यू गेट दैट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज हाई. मेरे को भी थोड़ा बहुत होता है, बट जो वॉल क्लाइंबिंग वाला हाई था ना, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता. इट वॉज एब्सोल्युटली फिनोमिनल एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. हाँ, मतलब I end up completely drenched in sweat afterwards. You start getting like calluses and burns on your hands because you have like, and the biggest thing is you get a lot of uh, hand strength and pulling strength आपकी बहुत हो जाती है, because sometimes you can grab onto things like this, but I have had things where I have to grab them like this, and other times आपको pinch करना पड़ता है, sometimes आपको push करना पड़ता है. It's a lot of those things. You want to have that Greek god bodybuilder physique? I don't know, I haven't decided yet. Skipping rope is the best exercise. Yeah, fair enough, man. Who do you think would be the Ozil for Arsenal in the squad? Ozil is, yeah, Ozil तो यार Ozil जैसा तो कोई नहीं होगा, but I think the closest person to that will probably be Martin Odegaard. Where's my actual home in India? It's in Gurgaon, yaar. Daksh bhai, when was the last time you went hiking? Oh, good question. Yeah, it's been a while, to be honest. I think during COVID only. During COVID, I was in my college town only in Manipal. तो वहाँ पे restrictions थी, but there are less people, so you could still go around and it'll be fine. So we used to go there, and हमारे professor एक दिन हमें ले गए. So I went to a waterfall hike. एक तो वेजिटेरियन होके बल्किंग करना बड़ा बोरिंग है भैया. आप ये आयरलैंड में गेम्स देखने जाते हो लाइक शैमरॉक और डंडॉल्क वगैरह? नहीं, आई गो फॉर बोहेमियन गेम्स, बट यस, आई डू गो फॉर गेम्स. अभी जनवरी में शुरू होने वाला सीजन वापस. ओके. या फॉर फुटबॉलर्स एजिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट. यार आई थिंक बताऊँ क्या, ट्रेनिंग के अराउंड ना, वन थिंग आई फाउंड आउट इन ट्रेनिंग इज देयर इज जस्ट so much crap online, all right? Like, I remember when I was first getting into it and I was doing tricep exercises, somebody was like, "Ye wali exercise mat karo, it's the worst for you." Somebody was like, "Ye exercise karo." There is just so many conflicting opinions on stuff, right? Somebody says you should go for a power lifter physique, or somebody says don't go for a power lifter, go for a bodybuilder physique. Somebody says go for this build, that build. There's just so much information. It's like an overload, okay? And you don't really understand कि आपको किसको follow करना चाहिए. So that's the whole thing, man. I just got over it, and I just do a bunch. Uh, I just do like these fixed number of exercises, like 3 to 4 for each part of the body. Good night. Bye 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 bye. All right, Jeet Salal is the best. Dekho yaar, everyone has their own thing.
आपको टेनिस कैसा लगता है? नेवर वॉच्ड इट, नेवर लाइक्ड इट. हाउ डिड आई गेट इनटू यूसीडी? यार, I'll tell you in short. Basically, at the end of my masters, I realized I want to do my PhD. So I sent my proposal to a bunch of professors. One of them at UCD really, really liked it, and he asked for an interview, and I gave that interview. Then I gave the interview to the university. वहाँ पे approve हुआ, and then finally we started working together, and that's it. That's how the PhD process usually goes, where you have to convince a panel that you are a fit student for research. अरे यार, फुटबॉल की बातें नहीं करते प्लीज गाइस. D'Souza Pizzeria in Gurgaon, खाने के आगे कुछ नहीं. Mr. Popo. So you got a scholarship. Yeah, I got a scholarship. Um, Not MIT, Stanford. And yeah, I did like 3 quarters there. How does a PhD work exactly? Usually, you start reading on what exactly has been done around your project. Then, based on that, you find a missing piece of information in your literature. फिर आप उस पे काम करके you contribute to the entire field. So for example, I thought कि देखो यार, वॉर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं. वॉर के ऊपर ये लिखा गया है, वॉर ऐसी है, वॉर इसलिए होती है, वॉर के ये कारण हैं, ये वॉर है, वटेवर. ठीक है. फिर लोग लिखते हैं कि साइबर ये सारी चीज़ें चेंज करेगा, ये सारी चीज़ें करेंगे, बट एंड देन आई फाउंड कि ठीक है, अगर आप इन दोनों को मिक्स करोगे, सो दिस एरिया पे गैप है, मे बी वन ऑफ दीज गैप्स आई कैन एक्सप्लोर, एंड दैट्स इट. So I started reading about, has anyone explored this gap? Okay, not as much. Okay, this is what they say, but I completely disagree with it, or I want to improve it and stuff like that. And so I will say that for PhD, it's all about finding things which are not being explored as much, or disproving something, or reproving something, or improving something, right? So either you create new knowledge, either you dispute an existing knowledge, either you improve an existing knowledge, right? And so you do these, one of these three four things in your PhD, and that's it. You create something and you add to the existing literature so that your work can be beneficial to somebody in the future. um PhD कितने साल का होता है max? 3 to 4 years. You can, although max to max, you can, I've seen people do it for 10 years also, but yeah. Thank you for providing. अरे क्या पागल है क्या, मुझे थैंक यू क्यों बोल रहा है, but thank you so much. But yeah, most possibly I'll having my interviews for PhD. Any tips on how to have a positive impact? Just be very familiar with the literature. Speak what you know. Don't have any arrogance कि देखो यार ये तो मुझे पता है and everything. Be familiar with your work. Be familiar with the project के आसपास के जो, मान ले, let's say, uh, be familiar with who are the leading authors of the work in your field, and उनके क्या विचार है, and what, how does their work impact you and everything. And so it's not going to be simple. I will give you one tip. Huh? There is this guy on Twitter called Mushtaq Bilal. Mushtaq, Mushtaq Bilal. ठीक है. He does this very good series about using AI in PhDs and about research and writing and teaching. And he does a lot of these things. Okay. He's also done this thread about how he nailed his PhD interview and how he failed at first, then he nailed it later. Teaching interviews, I think. So go for him, या प्रतीक, मुश्ताक बिलाल का. Just go through his profile, search कर ली उसकी profile पे for interviews, and I think he'll tell you how to do it. You can go through it. I think it was a really nice thread. I remember reading it. You cook your own meals? Sometimes yes, sometimes no. Any recommendation, information podcast? Yeah, I don't like informational podcast. Let me be honest. I think it's mental. मैं वर्ड बोलूंगा तो डिमोनेटाइज हो जाऊंगा, बट समझ जाओ, ठीक है. बिकॉज मेरे को लगता है पॉडकास्ट सुन के आपको लगता है कि आपने कुछ सीख लिया है, बट आपने जब तक अप्लाई नहीं करते तो खाली ही रह जाता है. सो आई डोंट लाइक पॉडकास्ट, स्पेशली इंफॉर्मेशनल पॉडकास्ट. बट इफ यू वांट टू डू इट, देन आई विल से क्रिस विलियमसन का आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं आप. लेक्स फ्रीडमैन का सुन सकते हैं, और आप एंड्रयू हुबरमैन. 3 बता दिया आपको. इतनी पढ़ाई बाप रे बाप. अरे होता है यार, करना पड़ता है. It's a very very big thing यार. PhD is a huge commitment, which is why I can't be like super regular. I'm तो very surprised I'm putting out so much content, to be honest guys. मेरा तो प्लान था, जब मैं PhD कर रहा था, मुझे तो लग रहा था मैं 1 या 2 बार a week ही आ पाऊंगा, but doing it like 4-5 times a week, getting 12K subs,
earning the money I'm earning, thankfully, thank you God. I never expected this. So this is a huge thing for me, but I have to now temper and focus a little bit more on my PhD. Do interns have to go through interview? If so, will that be hard? What's your thought? Yeah, man, everyone has to be interviewed. And is it hard? Depends. If you're nervous, it'll be super duper hard. But you have to understand they're just checking if you know what you're talking about. आप झूठे नहीं हो. They वो they आप झूठे नहीं हो और आप जो अपने सीवी पे लिखे वो हो बस. That's it. Anyways, मैं निकल रहा हूँ guys. 2 घंटे होने वाले. It's about time I start studying. It's 10 a.m. here. मैं बस 2-3 घंटे अच्छे से डीप वर्क करके पढ़ूंगा एंड दैट्स इट. बट पीएचडी में ऑल्सो गेट पेड तो सही रहता है ना. आई विल ऑल्सो माइट या कुछ कहीं कहीं जगह यू डोंट गेट पेड एंड टू बी ऑनेस्ट आज तक यू डोंट गेट पेड इनफ ऑल्सो. It's not enough. You get uh, it's okay if you want to survive. It's not enough to thrive. That's it. That's what I'll say. Anyways, guys, see you all. Tata, bye bye, still balls, Batman. Happy New Year to everyone. I hope आपके resolutions बिल्कुल सही हो जाए. Me being so late to the stream. Yeah, man, 2 घंटे हो गए. कोई बात नहीं. Next time, Itachi. Next time. Happy New Year to all of you. आप लोगों ने अपने 2023 रेट किए. Thank you so much for that. जिनके भी लो रेटिंग थी आई होप इट इंक्रीजेस. जिनके भी मीडियम रेटिंग थी आई होप इट इंक्रीजेस. एंड जिनकी अच्छी रेटिंग थी आई होप इट स्टेज द सेम. सो या, आई सी यू ऑल लेटर. टॉक टू यू सून. टाटा, बाय बाय, सी यू. फिर से मैं एंड स्ट्रीम करना भूल गया.